Hey, what's up guys? इंट्रो कैसा लगा पहले तो ये बताइए. बढ़िया म्यूजिक था। Yeah. So hi Vaani, hi Disha, hi Hindol. How are you guys? नमस्ते। Hi Vaani, hi Disha. क्या हालचाल? All good. दिशा हम का like background हर stream के साथ better होता जा रहा है. Like yeah, she's like doing some small like nudges to make it better. Yeah. hmm. पीछे बताइए ना क्या क्या है आपके बैकग्राउंड में like all those things like ये album art से हैं what are they? So can you recognize the frame over here? Oh, the frame I can. Yeah. Yeah. ये frame And this yeah. over here, ये वाला postcard. Oh. No, it's the CCT logo. Yeah, मैं कह रहा हूँ इसीलिए वो था yeah. हाँ, ये वो है ना, क्यू कार्ड है इसका अपना। हाँ. Oh, lovely dude, lovely, nice. Yeah. There's an octopus on the chair over there. And Dude, I that like Oh, that octopus green one. yeah. and when you turn it the other way around, does it come out to No, be no, sad? no, no. It's not Not the that one. no, Ah. not that cool. अंदर कुछ और बाहर कुछ और। But yeah, this is a cool background and like so nice to like meet you guys. हम अभी बात कर रहे थे guys before the stream started. अभी हम ऐसे कुछ दिन पहले ही बैठे थे जब 1 लाख सब्सक्राइबर वाले स्ट्रीम हो रहा था. And right now we are on 177. 177। Yeah, so we are just like 23,000 short of 2 lakh subscribers, which is great. But so nice to like do this, guys. आज हम बात करने वाले हैं हमारे फेवरेट मूवी सीन्स की. बहुत सारी और भी बातें करेंगे. स्ट्रीम लाइक कर दो. आई नो आप लोगों ने ऐसे बहुत लोगों ने हमें फीडबैक में लिख के भेजा था कि आप लोग लाइक करने के लिए बोल देते हो, फ्लो ब्रेक हो जाता है. बट गाइज दिस इज अ लाइव स्ट्रीम. हम भी चाहते हैं कि यार लाइक दिस इज अ फुली फंक्शनल लाइक थिंग फॉर अस. सो उसमें लाइक करना आपको लगता होगा कि फ्लो ब्रेक कर रहे हैं, बट इट मीन्स द वर्ल्ड टू अस बिकॉज इट रियली क्रिएट्स अ डिफरेंस. सो आप स्ट्रीम लाइक कर दो जल्दी से, 200 लाइक्स कर दो. एंड लाइक बहुत शानदार स्ट्रीम होने वाला है. बहुत पहली बार आज हम चारों लिस्ट बना के प्रिपेयर करके आए. लाइक सब अलग तो करते ही होंगे, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑल फोर ऑफ अस हैव लाइक मेड प्रॉपर लिस्ट. एंड आई एम लाइक और सबकी लिस्ट मेरे को मतलब आई थिंक मेरी सबसे कम अच्छी थी. मैंने जब थी बाकियों की देखी ना, इन द सेंस कि मैंने जब भेजी मैंने कहा यार शिट हिंडोल कितनी अच्छी है, फिर वानी की भी इतनी अच्छी थी. लाइक देयर आर प्रॉपर सीन्स यू गाइस हैव रिटन. लाइक सो वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. मतलब जो टेक्निक मैंने यूज की थी, मैंने बताया भी था आपको, वो भी एक सीन से आई है कि दिल चाहता है मैं आपका वो सीन था ना जब आकाश को बोलते कि लाइक इफ यू क्लोज योर आईज एंड यू इमेजिन समवन देन दैट पर्सन इज योर ट्रू लव. तो मैंने वही किया, क्लोज माय आईज, जो सीन मुझे याद है मैंने लिख दिए 10 सीन. चलो नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट देम बिकॉज़ दिल चाहती है में तो ये होता है ना, वो जब आंखें बंद करने के लिए बोलते तो उसको आंटी आती है उसके दिमाग में, वो जो वो तो मतलब that was a joke. yeah, that was him being Chandler, but yeah. Yeah. So guys, but like before like we start the stream, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि Hindol is now a celebrity. Very recently he became a Twitter celebrity, and Hindol का एक tweet viral जा चुका है. Like it has completely like I would like to take 37% credit for it because I was the first one to retweet. And मेरे को इतना अच्छा लगा वो tweet, मैंने Hindol को voice note भेजा. Bro, the tweet you did made today, like it's very funny. And cut to today, it has 700 likes. All the big writers you can think of, all the Scorsese's and everyone have like retweeted it. But like genuinely, it's very good. अभी हम आपको screen share करके भी देंगे. Like Hindol आपको सुनाई देगा. थोड़ा वर्सोवा जोक है, but Hindol, what's the tweet? Wait, I have to read it out. See, if I read it out, वो खराब हो जाएगा. मतलब you have to read it. You have to be there to experience. You have to feel it. Yeah. Note मत करो, feel करो. Note मत करो, feel करो. Another great scene, by the way. So yeah. एंड गाइस कमेंट करते रहिए. हम लोग आपके कमेंट्स को ऐसे वो भी करेंगे, लाइक शोकेस भी करेंगे. लोन वुल्फ इज सेइंग हिंडोल हैज द सेम टेस्ट एज मी इन मूवीज एंड ह्यूमर. क्या कहना चाहेंगे आप लाइक हिंडोल? बस इतना सा खौफ है और क्या. बट आई डोंट थिंक जिन लोगों के बारे में मैंने ट्वीट किया है वो मुझे अलाउ करेंगे वहां घुसने में. सो जिंदगी थोड़ी मुश्किल होने वाली है. Yeah, someone commented blue tokai wala, like yes, it's the blue tokai one. So Hindol basically said, like badly paraphrasing, that like he once went to blue tokai without like final draft installed in his laptop, and they called him to the back of the store and shot me in the leg. So,
Yeah, It's a Blue Tokai in Warsaw, only Blue specific. Tokai in Warsaw, particularly the Aramnagar Part 2 one. So बहुत ही छोटा niche पकड़ा इंडोर हाँ, ने, but बट like उस नीश everyone में like भी 700 लाइक आता है तो भाई देख उसमें लो. भी 700 like आ गई. So many guests of Chalchitra have हाँ हाँ. also like liked it. The writer of Scam 92 also liked it. So Dude, बहुत the अच्छा writer लगा. of Sacred Games retweeted and said कि मैंने लोखंड वाला में बैठ के लिखा था Sacred Games. मैं like भाई कहाँ ज्यादा फेमस हो रहा है ये, मतलब नहीं नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा नीचे. Yeah. So yeah. But like Hindol की Hmm. जो फेम है वो सिर्फ ट्विटर तक लिमिटेड है, क्योंकि हिंडोल अनफॉर्चुनेटली स्टिल नॉट फेमस ऑन सम अदर प्लेटफॉर्म्स. Yes. या कुछ जैसे कुछ कि कहना चाहेंगे हिंडोल आप? हाँ जैसे कि Tinder. But yeah, today is not about Tinder. Today is yeah. Today is about an app which Vaibhav recommended to me and या to a lot of people in a very nice reel. या सो And, मैंने जो 20 टीवी शोज वाला वीडियो बनाया हाँ था, इंटरेस्टिंगली इट लाइक डिड वेरी वेल. एंड लाइक yeah. उसमें मैंने पहली बार बताया था कि मैं लेटर बॉक्स क्यों यूज नहीं करता, बिकॉज आई यूज नोकियो. एंड Hmm. नोकियो पे लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन फॉलोइंग मी एंड चलचित्र. एंड Hmm. देन लाइक हिंडोल एट 2 a.m. wrote me a very big message कि hey, I've been like working with you guys such for such a long time, and like you guys still haven't given me a verified profile on Nokio. एंड देन लाइक हिंडोल को अब एक वेरीफाइड प्रोफाइल मिल चुकी है नोकियो पे, और हाँ हिंडोल को आज ही मिली है वेरीफाइड प्रोफाइल. कैसा लगता है हिंडोल जब ऐसे वो ब्लू टिक आता है सामने? बहुत 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 खुश हूँ मैं, और आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स एंड माय टीचर एंड एवरीवन एंड या. या तो हिंडोल हिंडोल तो गाइस आप लोगों का टारगेट है. अभी हम जब मूवी सीन्स की बातें करेंगे, हिंडोल करंटली हैज हाउ मेनी फॉलोअर्स देयर? आई हैड 9 फॉलोअर्स जब. या सो गाइस मेरे अभी हम मैंने भी रिसेंटली बनाया. आई हैव अराउंड 500, चलचित्र हैज अराउंड 600, हिंडोल हैज 9. यू गाइस हैव टू टेक इट टू अ नंबर व्हिच इज बिगर देन लाइक आपको बेसिकली मेरे फॉलोअर्स को सरपास करना है. छोटे से स्टार्ट करेंगे. हिंडोल के बाय द एंड ऑफ द स्ट्रीम 100 फॉलोअर करा दो नोकियो पे. बहुत हाँ शानदार ऐप है गाइस. लाइक अगर आपको लिस्ट बनानी है तो, और लाइक जो भी मूवीज देखते हो, जो भी शोज देखते हो, यू कैन पुट दोज ऑन लाइक नोकियो. एंड लेटर बॉक्स में सिर्फ मूवीज के लिए ही होता है, राइट? प्राइमरीली like Nokio पे you can do for like short films, you can do for TV shows. So fun app है, हाँ and like you guys should really check it out. We'll keep talking about it, और हिंडोल अपने followers refresh करते रहना. We'll हाँ. come back to it. But movie scene से चालू करते हैं. And सीन क्या है? oh, there is like Nokio gang आ गई. अर्चित शर्मा has commented Nokio gang assemble. Yes. Oh, हिंडोल के सिम्स आ गए. God हिंडोल, प्रदीप. हाँ मैं अब पेटीएम भेजो नंबर अपना, मैं करता हूँ. Yeah. Okay, guys. So, can we have a first banner and all? Today, we are going to talk about our movie scenes, our favorite movie scenes from India. The Hollywood and World Cinema Edition will be like doing separately. So, हाँ. guys, comments में भी आप लोग अपने favorite Indian scenes की बात कीजिए, and then we'll get to other things. So, yeah, हम start करते हैं. मैं एक मेरा छोटा सा एक सीन बताता हूँ जो मेरे को बहुत पसंद है, and then you guys can like take it from there. I want to start with a scene from the movie Khosla ka Ghosla, जहाँ पे the father and like son have a drink for the first time. And it's a scene like, because I have also seen that, like I have seen that scene with my dad quite a few times, and that awkwardness where a father and a son like are like having their first drink, and the son is like कि मेरे को नहीं पीनी है आपके साथ, and the father feels, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है कि हाँ तू इतना बड़ा आदमी हो गया कि तू अपने पापा के साथ ड्रिंक नहीं करेगा. एंड देन द फादर के एग्जांपल, अरे मतलब वो किन्हीं अंकल का नाम लेता है, उनको चौधरी जी को देखो, सानी साहब पागल है सानी वैसे. साहब, सानी साहब को देखो, वो ऐसे ही रोज पीते हैं. So it's a very very good scene which captures that like middle classness of things very perfectly. कि जब वो लेके भी आते हैं ना, like we see अनुपम खेर like खोसला साहब going at a wine store, और वाइन स्टोर पे जाके जब वो ऑर्डर कर रहे होते हैं, इतनी भीड़ है, और वो एक पॉलिथिन में जब ऐसे शर्मा शर्मा ऐसे के लेके आते हैं, हाँ, ऐसे करके लेके आते हैं, एंड देन वो फिर ऐसे आके म्यूजिक चलाते हैं. एंड दैट रणवीर शोरी के साथ उनका डिस्कशन कि जब वो आइस पहले डालना है या ड्रिंक पहले हाँ डालनी है, तो वो बोलते हैं अरे ऑन द रॉक्स फिर जब भी होता है, लाइक very nuanced scene which like reveals a lot. So that is the first scene I want to talk about. आप लोग अपने like लिखते रहिए जो भी आपके favorite scenes है, but this was my first recommendation and one of my favorite scenes, the drinking scene of Khosla ka Khosla.
Now let's like who wants to take it next? A broker hai ya party, nice one. Yeah. Yeah. So yeah. So Hindol, do you want to go next? Yeah. Yeah, I can go next. तो चलो वैभव ने बोला था रैंक करने के लिए बट लाइक आई रियली कुडंट रैंक दिस तो मैं आई विल टेक इट इन द थीम वाइज जाते हैं तो हम लोगों ने अभी मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्ट किया सो द सीन आई एम पिकिंग फ्रॉम माय लिस्ट इज फ्रॉम द मूवी पीकू एंड Oh, पीकू nice. का ये सीन है जब टुवर्ड्स द एंड वेयर अमिताभ बच्चन कैरेक्टर बेसिकली सेज कि मुझे घर जाना है एंड वो कान हियरिंग एड की बैटरी नहीं है एंड फाइनली इरफान खान स्नैप्स एंड वो उनको पूरा एक मोनोलॉग देते हैं कि मतलब प्रलय आ जाएगी क्या दो बातें कान में नहीं पड़ेंगी तो मतलब इतना कर रही है आप क्यों बर्डन बर्डन कर रहे हैं ऑल ऑफ दोस थिंग्स तो मतलब जब दैट इज वन सीन जो मतलब हमेशा ऐसे याद रहा है बिकॉज मतलब आप जब बड़े हो रहे होते हो तो मतलब आपको बागबान दिखाई जाती है एंड लाइक ऑल ऑफ दोस थिंग्स व्हिच इज द पेरेंट साइड ऑफ इट बट नोबडी टॉक्स अबाउट द किड साइड ऑफ इट कि मतलब एक पॉइंट के बाद जो पीकू का मेन मैसेज था कि आफ्टर अ सर्टेन एज यू हैव टू केयर फॉर योर पेरेंट्स लाइक दे आर योर चिल्ड्रन तो वो Yeah. वाला बहुत लाइक बढ़िया सीन था एंड again every single actor in that scene deepika matlab deepika doesn't say anything but the way she's like you know this man gets me this man gets everything that I've gone through so काफी सही था and on the same rank मैंने एक और scene रखा है from Sujit Sarkar's universe is from Vicky Donor and it also involves drinking तो उसमें जो बीजी होती है बीजी एंड विकीज मॉम ड्रिंक एवरी नाइट एंड वो कुछ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स हैं एंड इट जस्ट लाइक सो नाइस टू सी टू वुमेन Nice. यू नो एट दैट एज ड्रिंकिंग तो या काफी सही सीन्स थे वो Amazing. काफी दोनों काफी सही scenes हैं and Piku I think वानी को भी बहुत पसंद है. She also like wrote about it. Before I go to Vaani, I just realized 160 people are watching and we only have 78 likes. So Guys, ये like तो कर दो यार. लाइक कर दो यार मतलब बड़ा मैं बता रहा हूँ ना पहली बार हम चारों प्रिपेयर करके आए हैं तो मजा आएगा लाइक कि लाइक अगर हिंडोल के नोकियो पे फॉलोअर बढ़ेंगे अगर आप स्ट्रीम लाइक करोगे सो इट्स लाइक अ विन विन फॉर एवरीवन सो प्लीज लाइक जल्दी से लाइक कर दो एंड 160 लाइक्स कर दो एटलीस्ट जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक हो जाए एंड लेट्स लाइक टेक इट लाइक वानी आप क्या पीको के सीन के बारे में बात करना चाहेंगे Yeah, I was going to take up another movie because Piku का कोई particular scene नहीं था मेरे दिमाग में. I just mentioned Piku in the list because I was like, okay, deep, by the end of the day, I'll be able to figure out कौन सा scene I like the most. But Yeah. because Hindol mentioned middle class families, मुझे Kapoor and Sons का एक scene बहुत पसंद है. वो starting में ही आ जाता है plumber वाला. Where the plumber is in the I don't know how many of you remember, but plumber is in the washroom. He's trying to fix the pipes. Ratna ma'am and her husband are fighting, and eventually he's like, "अगर मैं बाद में," and then the Ratna ma'am is like, "नहीं नहीं तुम अभी करके जाओ." And he's like, "अरे तू अपना काम हाँ करना यार." And then eventually the tension yeah is so so the much. He fixes everything, then he comes out, and then Rajat Kapoor, I think Rajat Kapoor has played that actor, that character, and he asks him कितना लोगे, कितना हुआ तुम्हारा, and he's like अब इतने बुरे वक्त में जो भी हो वो दे दो. I just that whole banter is so like I've had similar fights at home, seen my parents fight like that, but then it's like every family's yeah story. such a The great pick whole- this is such a Yeah, nice scene that's one of my favorite And scenes. the funniest thing in that scene is कि सिद्धार्थ मल्होत्रा आता है right बीच में scene के And and for no reason he gets yelled at. I'm like yeah this is I get this is me. that is the life of the youngest sibling. Yeah, Yeah. amazing, Yeah. amazing. Like Disha, like which is a scene that you want to pick? So all of the scenes that I have put down are काफी intense and I think Yeah. अभी वो माहौल नहीं है. So the only funny one is I put down Amar Akbar Anthony में जो drunk होके अमिताभ बच्चन आते हैं and पिट के Oh, आते हैं and yeah. he's trying to take care of himself. That is the most. It is so adorable that scene क्योंकि वो कितने प्यार से अपने से बात करते हैं and then he tries to nurse himself in the mirror. I think I've never thought of him as a good actor, comedy wise, but in that scene, he's so naturally hilarious. It's Yeah. yeah. Do you remember this scene?
काफी वो इंटरेस्टिंग वो था एंड इसकी एक स्टोरी है मतलब थोड़ा भी है सो वी हैव डन एन आर्टिकल फॉर 40 इयर्स ऑफ अमर अकबर एंथनी एंड मनमोहन देसाई जो डायरेक्टर है उनकी स्टोरी थी तो उन्होंने उनकी ऐसे 4 फिल्में साथ में शूट हो रही थी 1977 में लाइक ही डिड 4 ब्लॉकबस्टर हिट्स इन 1 ईयर एंड ऑल द मूवीज वर बीइंग शॉट टुगेदर तो उस Yeah. टाइम पे लाइक अगर आपको सीन चेक करना होता था तो शूट होके देन यू सी इट एट अ ट्रायल स्क्रीनिंग सो ही सॉ दिस सीन जो मिरर वाला सीन है and after this scene, he went up to Amitabh Bachchan and said, "Ki from now on, you will be in every single movie of mine." And till his death, he followed that. तो काफी ये important scene है इनकी life का. Yeah. Yeah. Nice. Lovely. So, yeah, such a great pick. And मैंने अभी thanks to नैनिका, big shout out to नैनिका. नैनिका ने जितनी भी हमने picks की हैं, उन्होंने उनकी सारी images इकट्ठी की हैं. So like every time someone picks up something, मैं like I'll try to like also show the image for that. हाँ. Karan, thanks for pointing out. एक super chat आई है, हम जल्दी से दिखा देते हैं. दिशाहीन streams क्यों नहीं होते बिल्कुल भाई जी? भी I भी guess. I think हाँ. they came. भाई भाई जी थैंक्स आकृति लाइक दिशाहीन आजकल लाइक हैव यू सीन द प्रियदर्शन वीडियो गाइस लाइक सबसे पहले तो हमें ये बताइए एक बहुत शानदार रैंकिंग प्रियदर्शन फिल्म्स करके दिशा और हिंडोल ने एक वीडियो बनाया था एंड दे आर मेकिंग अनदर वीडियो दिस मंथ लाइक हाँ. डू यू गाइस वांट टू रिवील व्हाट आर यू गाइस वर्किंग ऑन It's about two very famous shows, and Disha is a fan of one show, and I'm a huge fan of the other show. So हम लड़ने वाले हैं, and या we'll see which show becomes the winner at the end. So let's see. Yeah, yeah. So yeah, that's happening. Oh, by the way, I want to give a quick shout out to two guests who have come on our channel who have a very big date like today, and they हाँ. are Kumar Varun and Manvi Gagru. Both have been like on Chalchitra Talks. Guys, जल्दी से comments में उनको congrats बोल दो उनकी आज शादी हुई है. Yeah. And I remember जब उन्होंने Valentine's Day में पहली बार फोटो डाली थी तो देवैया ने comment किया था. X is a person who is this. Y is a person who is this. Identify X and Y. It was such a Yeah. brilliant comment. Yeah. Actually there is another guest who has come on the channel जिनकी आज शादी हुई है शिवांकित परियार जिनको आपने वो Oh teaser में शिवांकित yes, की भी देखा आज ही हुई है yes, शादी. है yes, आज की yes. शादी हुई है so उनको भी please congratulate कीजिए so yeah. Yeah, this is amazing and like great fun and like nice picks, guys. And next कौन उठाना चाहेगा pick? हाँ मेरे को मेरी अब pick आई गेस हमारा ऑर्डर बन गया है तो ना अभी Hmm. पार्सल आपके पास आया है वैभव पार्सल मेरे पास है. हाँ. सो मैं एक सीन उठाना चाहूंगा. हाँ. शौर्य मूवी का एक सीन है जो के हम्म. मेनन की एंड की स्पीच है राहुल बोस के सामने. हाँ. मैंने शौर्य मूवी मेरी लाइफ में बहुत लेट देखी थी एंड बट दैट सीन है समथिंग व्हिच हैज स्टेड विद मी लाइक बहुत ज्यादा. हम्म. और द इंटेंसिटी ऑफ के मेनन इज समथिंग दैट आई एनीवे लाइक अ लॉट. Yeah. एंड मेरे को आज भी याद है लाइक जकी और मैं मतलब अभी भी कभी कभी एक दूसरे को फोन लिया करके ऐसे एक लाउडली वी सी द लाइक द डायलॉग्स ऑफ लाइक दोस सीन्स कि खून खून नहीं खोला और लाइक लाइक बहुत ज्यादा पसंद है. एंड इट हैज सम वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्स. अगर आप जाओगे यूट्यूब क्लिप लाइक उस पे तो बहुत ज्यादा उस पे खतरनाक कमेंट्स आए हुए हैं. सो शौर्य का जो सीन है इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट. सो कोर्ट रूम ड्रामाज मेरे को एनीवे बहुत ज्यादा पसंद है एंड लाइक इट्स लाइक ऑब्वियसली लाइक इंस्पायर्ड फ्रॉम अ हॉलीवुड मूवी. वो जैक निकल्सन ने भी हाँ. सीन किया हुआ है बट के मेनन ने कभी भी ऐसे लगने नहीं दिया वो कॉपी है. एंड हाँ. के मेनन गेव इट हिज ओन टच एंड के मेनन वाज एट पार विद जैक निकल्सन. Please cancel me for this. I would love to be cancelled for this line. Like, yeah. So है यार के मेनन कुछ बहुत ज्यादा लाइक एंड अलग. ऑन द टॉपिक ऑफ के मेनन अभी फर्जी में जो उनका रोल था वेयर ही इज लाइक 180 डिग्री ऑपोजिट ही इज प्लेइंग लाइक अ Yeah. कलरफुल फ्लैम्बॉयड आई लाइक टू सी हिम इन दीस रोल्स आल्सो कि मतलब ऐसे टाइम पास एक वो मूवी सिंग इज ब्लिंग बहुत घटिया मूवी है बट ओनली फॉर के मेनन देखिए कि भाई इवन ही इज हैविंग फन इन दैट तो I like seeing him having fun on screen so yeah. Yeah. So have you guys seen Shaurya, Vaani, Disha? No. Yeah, you guys have to watch it because of के मेनन particularly. उनकी जितनी भी scenes हैं and जो उनका army वाला aura है, the discipline he has, army and discipline like जो भी होता है they go hand in hand, right? So वो जैसे convey किया है like के मेनन ने. So आपको देखना चाहिए उसके लिए. एंड मेरे को इसीलिए वजह बहुत लोगों ने recommend किया था. मैंने बस बहुत लेट देखा and I just wish I would have seen like Shaurya Sona.
So that is one scene that I would like to recommend everyone. इससे related कोई guys like जो अभी join कर रहे हैं, हम Indian films की बातें कर रहे हैं. If we can like showcase that text and all. Today we are ranking Indian films. So आप Indian films की बातें कीजिए. जो लोग social network की और जितनी भी movies की बातें कर रहे हैं, we'll come to those. But आज का दिन like इसके बारे में हिंडोल अपने लाइक फॉलोअर्स चेक करते रहना नोकियो पे. जब आपको लगे एक भी बढ़ गया है बताना. एंड लाइक वील लाइक मेंशन इट अगेन. नोकियो हमने एक लिंक डाला हुआ है गाइस. हिंडोल को हमें उस पे 100 फॉलोअर्स कराने हैं. नहीं तो हिंडोल ने मेरे को धमकी दी है दैट लाइक ही लाइक डू समथिंग क्विज एक्स्ट्रीम. सीजन 3 नहीं आएगा फिर हाँ फिर क्विज का सीजन 3 नहीं आएगा. हाँ अब Oh. हिंडोल सर्फ क्या सर्फ खा जाएगा पी जाएगा. व्हाट्स पहले दैट? मैं पहले वैभव को पिलाऊंगा उसके बाद हिंडोल सर्फ पिलाएगा और लाइक हम लोग लाइक एंड लाइक देन हिंडोल सीजन 3 नहीं करेंगे. हिंडोल के नोकियो पे 100 फॉलोअर्स चाहिए हमें गाइस. हाँ. शौर्य इज अडैप्टेड फ्रॉम हिंदी प्ले कोर्ट मार्शल. हिंडोल हाँ, which is also based on a Few Good Men. Few Good हाँ तो Men भी मतलब एक स्टार्ट तो फ्यू गुड हाँ मेन से ही हुआ हाँ ना ये. हाँ Few Good Men भी पहले प्ले था फिर मूवी बना तो आरन सॉर्किन obviously सर हमारे. Yeah. तो Does anyone have any recommendations? Like now that I mentioned a scene where a one person had a big rant or a, like a monologue kind of a thing. Do you guys have any scenes which you might have or might not have written where the person was doing a monologue? The only एक second. monologue that comes to mind is very प्यार बताओ का बताओ. पंचनामा. प्यार का The पंचनामा. same thing came to And my that mind. wasn't in my list. प्रॉब्लम यही है कि मोनोलॉग क्या आप लोग उस सीन को मतलब लाइक क्या लाइक इन 2023 एंड मैं थोड़ा एक बार वो उसको पॉलिटिकल करेक्टनेस के हिसाब से नहीं कह रहा. डज दैट सीन होल्ड फॉर यू? सीन तो अच्छा है यार वो. I mean, the first one was of it was like still bearable. What came in after was not. Like Yeah. the then they when they tried to recreate the हाँ. Yeah. rants. Yeah. I also had a problem with the whole movie only, no, so I won't talk about it. Yeah. Yeah. So yeah. So who wants to go next? I have a Yeah. monologue scene. Yeah. अभी मैंने check किया. So this is from the movie Guru. जो अभिषेक बच्चन थे उसमें. Ah. एंड मतलब लोग ऑब्वियसली मणिरत्नम की सारी फिल्मों की बात करते दिल से वगैरह. एंड गुरु को लोग मतलब उतने अच्छे इसमें नहीं देखते. बट आई हैव अ लॉट ऑफ गुड मेमोरीज विद दिस मूवी एंड लाइक बहुत स्पेशल मूवी है ये मेरे लिए क्योंकि मैं हर समर वेकेशन देखता था. तो ये फिल्म मुझे याद है. मैं फ्रेम बाय फ्रेम पूरी मूवी ड्रॉ करके लिख के सब कर सकता. तो वो है. तो इसका जो एंड का क्लाइमैक्स है वेयर गुरु इज ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड बाय द एंड एंड उसको अपनी आवाज वापस मिलती है. लाइक लिटरली आवाज वापस मिलती है. एंड ही इज लाइक कि अभी कोर्ट उसको फैसला सुनाने वाले लाइक व्हाट इज हैपनिंग टू हिज कंपनी एंड ही सेज 5 मिनट चाहिए. एंड देन वो पूरा अपना पीस देता है. एंड इट इज अ वेरी वेल रिटन मोनोलॉग. मतलब गुरु ओवरऑल फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं विजय कृष्ण आचार्य ने जिन्होंने बाद में धूम 3 बनाई. बट रिगार्डलेस ऑफ दैट बहुत बढ़िया डायलॉग्स है फिल्म के. तो वो सीन बहुत अच्छा है. He says something in the end ना बनिया हूँ साहब सो मैं कैलकुलेट करके करता हाँ. हूँ. तो वो उसमें भी वो बोलता है कि आपने 5 मिनट का वक्त दिया था ना 4.5 मिनट में पूरी बात खत्म कर दी. 30 सेकंड मुनाफा. तो मतलब वो इतना बढ़िया ही है ना. लाइक इफ यू आर एवर राइटिंग अ मोनोलॉग प्लीज गो बैक टू दैट सीन एंड बहुत मतलब आपको आइडियाज मिलेंगे. सो दैट वाज वन सीन. एंड गुरु में लाइक जस्ट थोड़ा सा 20 सेकंड लूंगा. गुरु में एक और सीन है वेयर देयर इज अनदर कैरेक्टर जो मनोहर जोशी का कैरेक्टर है हु इज लाइक हिज बेस्ट फ्रेंड एंड उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया होता है. एंड ही इज इन द हॉस्पिटल एंड गुरु कम्स टू सी हिम. एंड वहां पे ही सेज कि मतलब इट्स ऑब्वियसली अ वेरी सैड सीन बट दे आर टॉकिंग अबाउट वेरी फनी थिंग्स कि मतलब शक्ल देख अपनी साले तेरे को कोई नहीं देखेगा. इस मैन बोथ ऑफ देम आर क्राइंग थ्रू इट एंड लाइक दे आर ट्राइंग टू मेक ईच अदर लाफ. एंड इट्स सच अ nicely written scene. तो काफी बढ़िया scene है. Hindol, you got me so excited because you mentioned like कि monologue which has something to do with suicide. मेरे को एक बहुत खतरनाक स्टोरी याद आई है. मैंने इसके बारे में एक बार एक बहुत लंबा इंस्टा स्टोरी डाली थी. So when जीतू came on चलचित्र टॉक्स, so जब like वो मेरे जब बॉम्बे रहता था तो वो जब घर पे आए थे और लाइक उन्होंने कहा था आधे घंटे के लिए आएंगे. वो 9 घंटे बैठे थे हमारे साथ और उन्होंने कहा था कि हम बस मूवीज की बातें करे जा रहे थे. एंड लाइक जीतू ने एक चीज बोली थी कि उन्होंने एक सीन दिखाया था. लाइक ही गेव अस अ लेक्चर ऑन अ सीन. एंड लाइक जीतू इज अ बिग फैन ऑफ इरफान, राइट? सो जीतू ने हमें इरफान का रोग मूवी का सीन दिखाया वेयर ही वाज प्लानिंग टू किल हिमसेल्फ. एंड देन वो नेक्स्ट डे जाके बोलता है मैं खुद को मारने वाला था बट वो मोमेंट चला गया.
हाँ और वो जो जैसे बोलता है ना, वो मोमेंट चला गया. एंड वो जो पूरा सीन है, लाइक स्लो डॉली, और वो इट्स अ वेरी पावरफुल सीन. लाइक हिंडॉल, लाइक यू माइट नो लाइक अबाउट लाइक व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. या सो एंड उसके बाद फिर वो गाना स्टार्ट होता है, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, लाइक हाँ, वो सीन मैंने इतनी बार देखा ना, लाइक आफ्टर ही हैज पास्ड अवे, तो पता नहीं, आई विश आई हैड सीन इट अर्लियर, बट लाइक इट आई डिस्कवर्ड इट ऑन दैट डे, तो वो थोड़ा ये हो गया. yeah. So a very fond memory. And like when you see someone talk very passionately about like any scene like that, so matlab mainly everything every time I think about that scene, like Jeetu yaad aa jata hai. And the way Jeetu ki eyes like ऐसे हाँ had that glow कि यार this is how I want to act. मेरे को इस रोग मूवी वाले सीन जितनी करनी है. Beautiful like experience of life. So yeah, and guys, 180 people are watching us right now, and we have 146 likes. So जल्दी से 30 लाइक और कर दो. एंड हिंडॉल के मैं देख रहा हूँ नोकियो में फॉलोअर बढ़ रहे हैं. एंड लाइक जल्दी से हिंडॉल को 100 फॉलोअर पे ले जाओ. हिंडॉल के डबल तो हो गए, मैंने अभी अभी देखा, जितने मैंने हिंडॉल के डबल हो गए. सो भाई दिस 9 पे थे, 9 से 10 हुए हम लोग, मतलब 9 से 10 तो होना ही था. नहीं नहीं 18 हो गए अच्छा एक्चुअली. अच्छा, डबल इन दैट सेंस, मैं तो डबल डिजिट वैसे. No, 18 हो गए. So yeah, he is on 18 now. And so Anandita is here. Anandita हमेशा बहुत अच्छे streams की हमारी फोटो डालती है. And she's like, I feel like I'm catching up on a live after such a long time. Like, and Vaani and I, like a lot of times when we are streaming, like बाद में Anandita, because she is also a gladiator, right? तो उनकी ऐसा फोटो आती है ग्रुप में and story आती है, और हम ऐसे बड़ा करके शेयर करते हैं like Instagram पे कि bro, such beautiful like photos. So yeah, so glad you guys are watching, and jaldi se like कर दो. Monologues वानी की गो बातें हो गई, नेक्स्ट. and like Vaani, what would you like to recommend? I don't have a monologue of sorts, and I have a very हाँ questionable movie ka scene to recommend. It's Ae Dil Hai Mushkil, and you don't need to watch the entire movie. There's just one Shah Rukh Khan bit that kind of steals away the entire show. And he's like, I think it's his art show only. I don't remember the details of the movie. And Ranbir Kapoor it's and a him good are thing. talking. Yeah. And he talks about प्यार में जुनून है, but दोस्ती दोस्ती में में सुकून, सुकून. whatever that is. But like the only whatever dialogues he's been given, and Shah Rukh Khan just makes the entire 3 hour journey bearable in that 1 second. And I also really like this scene where maybe it's just my internal angst talking right now, but jab Anushka Sharma is, I don't know, she's saying something to Lisa Head, and she goes like, Lisa, Lisa, Lisa. कुछ खाए और तू जल के राख हो जाए, एक जख्मी औरत के दिल का शाप है तुझे. She's like, sharp? What's that? And then Anushka was like, curse. She's like, please don't curse me. I really like that scene. I mean, One yeah. सही है यार, like Vaani taking acting career seriously. I love the transition कि हम लोग अभी इरफान की बात कर रहे थे. I know. This I is just the wanted to get done with it. इससे पहले कि like Hindol and Vaibhav and Disha, like you guys start bringing in more serious movies, better movies. I thought I'll just seek No, this is radiation right now. amazing. इसकी तो रील बनेगी भाई. अब तो like ये तो फटेगा बाहर. But yeah, So I yeah. love that part. These two scenes. The comment आया Karan का, guys, Vaani secretly likes Ae Dil Hai Mushkil but hates to admit it. Like she's admitting she likes a few scenes of it. yeah, I you like have that talked scene. about it way too many times. Yeah, which is very unhealthy for a human being. I just think there are certain, like, Lisa Hayden throws a glass of wine on Anushka Sharma, and she's wearing black. I remember all. And then Anushka Sharma goes like, कितने बेवकूफ औरत हो, काले कपड़ों पे कोई वाइन फेंकता है. And the next scene is Lisa Hayden, she's wearing white, and her walking out in stains of wine. So like there are certain scenes that stand out for me because of how Lisa Hayden is great in that, like those few yeah, scenes that she has. वातावरण and everything. Hindol just WhatsApp में कि ये ए दिल है मुश्किल वाला पार्ट कब तक चलेगा. So Okay, we're just done with it. But yeah, there were a couple of scenes that are like really Yeah. nice if you're someone who's very angsty. जैसे वो होता है ना, साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है कि जो कुछ आपकी डार्क मेमोरीज होती है उनको आप सप्रेस कर देते हो, आपको मेमोरी नहीं होती है वो याद. अब मुझे पूरी फिल्म देखने की मेमोरी वापस आ गई कि Oh. तो यार थैंक यू. But It like also had the moving most on, cringiest scene, but okay, moving on. like who like Disha, Disha. do you want to like yeah? Yeah.
सो कमिंग बैक टू इरफान खान, मैंने द लंच बॉक्स के तो बहुत सारे सीन्स हैं जो मुझे पसंद है, Oh. that we can talk about a lot, but the one scene that I like a lot is कि in the start of the movie where they are trying to establish his character, वहाँ पे वो घर वापस आ रहा होता है और उसके बिल्डिंग के यहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं एंड बॉल उसके घर के अंदर चली जाती है एंड ही yells at them और वो उनको बॉल नहीं देता. And then later that evening, he's standing in the balcony and smoking. And उसके सामने ही उस वही बच्चे अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहे होते हैं. And he's peeking into their house. And for some reason, that scene radiates so much loneliness, Wow. and it conveys so much without actually saying anything. फिर कट वो Yeah. बैठता है एंड वही खाना, आई डोंट नो इफ इट्स द सेम थिंग बट एट लीस्ट आई नोटिस्ड कि वो एक ऑरेंज ग्रेवी होती है जो वो सब ठंडा चाइनीज खाना खा रहा होता है. हाँ वो ऐसे प्लास्टिक की थैली से निकालता है एंड या आई लव दैट सीन. Dude, like I'm so glad you mentioned Lunchbox and मेरी Lunchbox की इसकी पता है first memory क्या है? That Rajiv Masan gave it 5 stars and Rajiv Masan उस time में किसी को 5 stars नहीं देता था. So I was like, holy shit, he gave it 5 or like 4.5 or 5, either of the two. So Lunchbox में one of my favorite scenes is when he actually goes to meet that lady and he मतलब वो वहाँ पहुँच जाता है, restaurant पहुँच जाता है and then he decides not to go in. Yeah. And then I think उसके बाद उनका VO है कि why he didn't do so and why he couldn't go in. It was such a holy shit thing for me कि bro ये मतलब like it's very realistic. And नवाज and जो इरफान का scene उनके जितने भी scenes हैं साथ में मूवी में, and like someone mentioned in comment also, thank you. Yeah, so I'm breaking the order. I'm really sorry, but अभी इरफान वाले अच्छा थ्रेड चल रहा है. So I have one scene जो मैंने पिक किया था. It's from the movie पान सिंह तोमर and like बहुत पसंद है मुझे ये मूवी because of Irfan's performance. तो उसमें एक सीक्वेंस होता है where his senior officer asks him कि तुम अगर ये आइसक्रीम लेके मेरे घर तक पहुंच पाओगे 10 मिनट में तो तुमको रेस में हम डाल देंगे. And वो करता है. And when Irfan is retiring from the army, उसको वही ऑफिसर वही वनीला आइसक्रीम गिफ्ट करता है. एंड द लुक ऑन हिज फेस, दैट होल सीन, इट्स लाइक years of service and everything. मतलब एक दोस्ती भी है, एक रिस्पेक्ट भी है, everything is in that one scene. तो मतलब बहुत बढ़िया, almost teared up thinking that scene, but yeah, काफी अच्छा scene है वो. Yeah, and I hadn't put it on my list, but like again, like Hindol said, it's a great thread, and we all love talking about Irfan. Irfan and Talwar, like I always keep saying it, ki Talwar movie mein, like I someday want to make a proper essay on the scenes of like Tabu and Irfan and Talwar. Like it's just like extremely amazing, and the namesake bhi mere dimag mein aa rahi hai कि namesake related जितने भी scenes हैं. So yeah, like I think पूरा हम like the Irfan special कर सकते हैं. Favorite scene from like India, like Irfan edition. Yeah. Guys, हम फोटोज नहीं दिखा रहे. हम फोटोज या प्लीज कीप. आई एम रियली सॉरी, मेरे अभी भी या उनका बॉडी ऑफ वर्क इतना है कि इंडिया नहीं मतलब इंटरनेशनल भी हम जा सकते हैं. Oh yes. So I have that. अरे ये PNG shit. So Nanika downloaded the PNG of like that like Irfan eating ice cream. You guys need to see this. Okay. ट्रांसपेरेंट है क्या? Ice cream is transparent. Yeah. So yeah. Moving on, like which is the next scene do you guys want to talk about? Is it my chance? Yeah. हाँ मतलब sorry अब मैंने order तोड़ दिया तो Okay, so this is a very serious one and I can speak at length about this one. One of the most pivotal points of my life was like watching Udaan, and that is the reason why I shifted to Bombay also. If I have to give credit to one thing, it was Udaan. Udaan mein there is this scene where the father gets to know that like the son has been smoking. Then the father asks the son to smoke in front of him, and in a very sadistic way the father is getting pleasure out of it, or the son is like taking those puffs in front of the father. So and there is too much silence in that scene, or like हम उनको देख रहे हैं वो डर डर के कर रहा है, but the son is like taking proper puffs. रोहन होता है उनका नाम, right? Like
रोहन जब like smoke कर रहा होता अपने father के सामने. So yeah, every scene in the movie Udaan has like always stayed with me. Um, um, पहली बार मेरे को ऐसे एक फादरली फिगर से डर लगा था किसी मूवी में देख के कि होली शिट दिस इज टू टू स्केरी. और बहुत ज़्यादा फॉन्ड मेमोरीज है मेरी उड़ान की. लाइक मेरे को याद है एक मेरे घर के पास एक दुकान होती थी जहाँ सीडीज मिलती थी, नेहा विजन. तब मैं साइकिल चला के, मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं थे और मेरे को था मेरे को उड़ान देखनी है, सो मैं साइकिल चला के नेहा विजन गया था. लाइक आई हैड लाइक बहुत मेरी हार्ट बीट अप थी बिकॉज आई वाज लाइक आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. घर पे पता चल गया मैं उड़ान देख रहा हूँ तो क्या होगा, बिकॉज आई थिंक दे डिडंट वांट मी टू वॉच उड़ान. एंड या दैट लाइक काइंड ऑफ was a Towards very the pivotal. end of the movie, there's this scene where he's running, and then he outruns his father. I remember watching this movie and I was crying so badly I couldn't breathe. I was watching it at somebody else's house and they had to get me water after water because I couldn't stop crying. And then that happened to me when I was watching Rang De Basanti. Just couldn't breathe in the last scene. Was crying cried buckets of water. Yeah, the run is very realistic also, क्योंकि the way they follow them, it's like कि वो ये actually अपनी like full sprint दे रहे हैं. It's not like ऐसे like faked for like television or like movie screen की okay ऐसे भागते हैं जैसे लगेगा ये तेज भागते हैं. Yeah. So if I may, Udaan mein, so there is a thing with car breakdowns. Like this is something I noticed. Like when characters have a breakdown in car, because car is a very safe place where you can like really shout when something is like going wrong, right? So कार में आपने अलग अलग मूवीज में अलग अलग सीन्स में इन शोज और लाइक एनीथिंग आपने बहुत जगह देखा होगा कि ऐसे हॉर्न करके ऐसे लाइक लोग कर रहे हैं. सो देयर इज अ वेरी गुड कार ब्रेकडाउन सीन इन उड़ान आल्सो, जब वो पूरा गुस्सा अपनी गाड़ी पे निकालता है एंड वे यू कैन फील हिज सफोकेशन देयर. सो या दैट इज आल्सो वन सीन आई वांटेड टू मेंशन. या प्लीज गो अहेड. I remember the very first stream Vaibhav when I did with Vaibhav was on Udaan and बहुत हम लोग एक Was it? हाँ 2 क्या बात घंटे का कर रहे stream है वो. and ये कोविड वाले टाइम पे 2020 का स्ट्रीम है ये. हम लोग बहुत घुस गए थे उस दिन. क्रेजी. अगर लाइक कोई मॉडरेटर्स देख रहे हैं तो प्लीज उस लाइक स्ट्रीम का लिंक लाइक चैट में डालें. एंड या it's not the father but the misogyny was scary. Shaurya Pathak is saying interesting. So और कोई ऐसे like I want Vaani to give one recommendation here because हम fathers की बात कर रहे हैं तो एक mother वाला scene है जो वानी ने mention किया था because if हमने list एक दूसरे के साथ exchange किया. It's a Shefali Shah scene. If you want to Dil talk Dhadakne about. Do is one movie. I mean, judge me however you want to. I love No watching one will judge you. Dil And I Dhadakne watched Do it actually is a again. very good movie. Yeah. We And- judge people who don't like Dil Dhadakne Do. I love Dil Dhadakne Do, like the family dynamics and especially Ranveer Singh's performance. I love him in that movie. But there's this particular scene jahan pe, she goes up to her husband Anil Kapoor, who's like kind of flirting with some other chick, and she's like, "Sabke samne kitni besti karoge?" And he's like, "Mehman hai hamare," whatever. Cut to the next scene. She goes to the washroom and she's stuffing her mouth with cake. And I had goosebumps when I saw it for the first time, and I was like, okay, she is probably this is like one of my most favorite scenes ever from Bollywood because this is just so realistic, and you see that okay, she probably has a problem. She has a problematic relationship with food because of everything that's going on in her life. And this is one outlet she's taken out, and I think it's one of the best scenes. I mean, the best acting also, of course. Shefali Shah is just amazing. Yeah. Dil Dhadakne Do also has this other really great scene जिससे किसी ने mention किया था chat में where they're all drinking together and Farhan. Rahul Bose says something shitty. he says कि मैंने permission दिए. Yeah. That's what and मेरी आज ही एक रील में एक सीन आया था, like literally इंस्टा रील पे ये सीन आया था where that auntie says मैं खुद को मार लेती हूँ. Oh, that's my favorite too. Like hand button है, कोई just land twice, land twice. So उनके हाथ में बटर नाइफ होता है तो वो दूसरा चाकू देता है. वो बटर नाइफ है.
बट लाइक Yeah. दिल धड़कने दो हैड अ वेरी केंडल रॉय एनर्जी रणवीर वाली ना कि वो बोलता अरे Yeah. मेरा प्लेन ले लिया आपने मेरे से अब मैं प्लेन नहीं उड़ा पाऊंगा सो केंडल रॉय डूड Yeah. या बट But ऑन it's द टॉपिक ऑफ दिल धड़कने दो, फर्जी में एक बहुत बढ़िया सीन है। सो वहाँ पे वो लोग एक अपने स्कैम के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं लोगों की। तो उसमें वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमने लास्ट इंग्लिश पिक्चर कौन सी देखी थी? तो एक लड़की बोलती है मैं दिल धड़कने दो देखी थी। oh man. nice. Yeah. Nice. Shaurya Singh Dil Dhadakne Do is Zoya's best work for me and really funny. I think in the Farhan Akhtar Zoya Akhtar universe we have some more recommendations. हाँ, You know, So I think we before we yeah. move on to the next, I have another scene I want to talk about from Dil Dhadakne Do. It's when Anil Kapoor has just had the gastric attack and everyone was afraid that he almost died or whatever. And you know, like only Shafali Shah enters first, and he's sitting on the bed, and she starts scolding him. And ki ye Yeah. kya ho sakta hai? And Anil Kapoor is taking very lightly, like, "Are you crazy, woman? Like, be nice to me, whatever." And all of a sudden, there's a knock on the door because Priyanka Chopra, the kids want to come in now, and she's like, "Yeah, yeah, yeah." And then it takes her a second to like sober up, like because she was screaming, she was crying, and she just does this, and she's like, "Nice." And in that moment, Anil Kapoor has tears in his eyes because he realizes what she's been doing for the past how so many years, and everything changes. And उसके just अगले scene में he's like क्या बात करनी है तुम्हें? And then Ranveer Singh is like इस family में सब ऊपर ऊपर से बात करते हैं. And then all of a sudden he's like, Ah. she loses time. He's like क्या बात करनी है तुम्हें? क्या करोगे? And then it's just I think the entire whole 15-minute thing is like really sweet. अगर एडिटर्स देख रहे हैं यहाँ हमारी सेकंड रील का पार्ट था जहाँ पे वानी ने सो यहाँ से एक और रील निकलेगी गाइस बढ़िया बहुत सही है वानी यू नीड टू लाइक शो दिस वर्जन ऑफ योरसेल्व्स No, लाइक I'm not going to enact lot. out anything. This is crazy. Can I take one Farhan Akhtar scene Wait, also? Agar like, Disha is not Yeah. recommended for a long time. Please recommend something. yeah, please. Okay, so should I do a Ranveer Singh recommendation Yeah. only? रणवीर Yeah, कनेक्ट हो रहा है कर दो रणवीर हाँ, is connect. So I have 3 of his, I think. Wow. He's I a don't know, I liked him that much. But Lootera is also one of my favorite wow. films. Oh And yes. उसमें भी बहुत सारे scenes हैं जिसके बारे में we can talk about. But वो जो end में he's trying to put a fake leaf on the tree and the desperation with which he does that whole scene is beautiful. Yeah. Even when he comes back into her life and there's a reintroduction, there is a point where he tells her his real name finally and बहुत intense scene था वो but फिर वो एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं which I think was very beautiful. Yeah. Nice. That's yeah. द लीव सीन, उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर है अमित त्रिवेदी का, वो एक मीम है ना, जो एक बंदा पियानो बजा रहा है और वो आग लगी होती है पियानो में, दैट इज अमित त्रिवेदी इन दैट सीन। उन्होंने पूरा अपना Yeah. करियर का डाल दिया कि भाई ये लो पूरा Yeah. रो तुम लोग। Yeah. So there's a super chat like I would like to address by हाँ, Mr. Hackett. The Zindi Na Milegi Dobara scene after they come up from scuba diving. It is in someone's list also among the It's four in of Yeah, us. mine. it's in Disha. Yeah, it's in Disha's list. Disha, do you want to talk about this one? Yeah. तो फिर उसमें उसका वो सब चल रहा है ही that entire sequence for I think 2 to 3 minutes वो पूरा शांति है ना and you can only hear music. तो जब And वो there is a ऊपर background. I think Farhan Akhtar is saying something in the हाँ, back. Like, but that also comes like a thoda बाद में But there is this one finally part where everyone is silent. हाँ, silent, yeah. And he comes up and he's only crying and I thought that was so beautiful. Yeah. They could have done so much to ruin it but they didn't do anything. They left it Bang as it on. is and it is what made it so impactful. नहीं और इट्स सो रियलिस्टिक जब आपका सही में इतना कुछ इम्पैक्टफुल इवेंट होता है लाइफ में यू जस्ट want to shut the fuck up like I know. so, And especially if you are underwater for that long, I yes. love the music they used तभी. And फिर तुम ऊपर आते हो तो वो exactly वो translate हुआ है screen पे. I don't know how, but very beautiful. yeah nice यार like lovely like Zoya Akhtar like मेरे को एक Zoya Akhtar वाली देनी है recommendation but I'll give it later because अभी flow break हो जाएगा. Does anyone like want to take it further like Hindol, do you have anything that you want to take like recommend? हाँ, तो मैं फ्रेंडशिप वाली थीम पकड़ता हूँ कि अभी हम लोग
Yeah. ZNMD की बात कर रहे थे एंड लाइक इट वाज अबाउट थ्री फ्रेंड्स हैविंग एन एक्सपीरियंस। तो ये जो सीन है ये आई कीप रिविजिटिंग दिस व्हेनेवर आई हिट अ डेड ब्लॉक कि यार ये सीन लिखूं कैसे। तो फिर आई गो बैक टू दिस सीन एंड दिस इज फ्रॉम लगे रहो मुन्ना भाई एंड दिस इज द इंटरवल सीन जहाँ पे मुन्ना भाई अपोलोजाइजेस टू सर्किट। इससे पहले वो सर्किट को थप्पड़ मार चुके हैं एंड वो बहुत ड्रामेटिक सीन है। पूरी बारिश हो रही है एंड लाइक सर्किट इज स्टैंडिंग पूरा काफी उन लोगों ने मूड वहां पे क्रिएट किया एंड देन गांधी जी इज लाइक कि नहीं आई वांट टू सी हाउ करेजियस यू आर, यू हैव टू गो एंड अपोलोजाइज। तो वो दोनों वहां पे समुद्र किनारे खड़े होते हैं एंड फिर वो शुरू करता है बोलना। तो नाउ द सबटेक्स्ट हियर इज कि I am sorry for everything that I've done. You are my true friend. Please come back. ये 3 लाइन का सीन है बट जिस तरह से उन लोगों ने लिखा है कि वो वही अगेन वो बात कुछ और कर रहे हैं कि मुझे गोली लगी थी देन यू टुक केयर ऑफ मी। मुझे एक दिन चाइनीज खाना था तो होटल से वो चाइनीज को पकड़ के लाया था क्या हाका नूडल बनाया था। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वो लोग बात कर रहे हैं देन दे बोथ ऑफ देम ब्रेक डाउन एंड हग। मतलब बहुत Yeah. बढ़िया सीन था। when I was watching Banshees of Inisherin अभी recently क्योंकि वो भी फ्रेंड ब्रेकअप्स के बारे में है ना तो Yeah. ये सीन बार बार मेरे दिमाग में चल रहा था because Yeah. it was a very real, you know, it went very real in terms of the emotion that it tapped. So yeah, that Yeah. was And in the Rajkumar Hirani's like cinematic universe, can I give a shout out to every Baman Irani scene ever? Like it's just like yeah. perfect, yeah. Like the guy is perfect, and the way he has nailed down all three characters. जो एक मुन्ना एक भाई like हाँ, two, एक छोटा मुन्ना भाई two, ये yeah, दूं ट्रिविया दूं। हाँ, तो yeah, जो लगे अपना मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो पहला अस्थाना का सीन होता है कॉलेज में जहाँ पे वो आके सबको वो बोलता है कि वी आर नॉट हियर टू मेक फ्रेंड्स। वो वाला जो हाँ, सीन था तो उसमें लॉट ऑफ इट वाज इम्प्रोवाइज्ड बाय बमन ईरानी कि वो जो पूरा हाथ ऐसे करके बोलते, ये Are you हाथ को kidding me? देखो। हाथ वाला हाँ improvise था? What? कि ये हाथ देखो रॉक स्टडी। हजारों ऑपरेशन किए इस हाथ ने लेकिन ये हाथ आज तक कभी हिले नहीं पर अगर मैं अपनी बेटी का This is ऑपरेशन करूँ तो improvised. इट वाज काफी कुछ उन्होंने इम्प्रोवाइज किया था कि मतलब क्योंकि उनका वो है कि ही वेंट अप टू राजू ईरानी एंड सेड कि यार देखो अस्थाना विलन नहीं है, वो अपनी जिंदगी में सही है, वो बस इस कहानी का विलन है। तो ही शुड कम अक्रॉस एज समवन हु मेक्स Yeah. सेंस। सो आई थिंक हमने कभी तो पोल किया था चलचित्र में कि विच विलन मेड द मोस्ट सेंस एंड उस पे मैंने अस्थाना लिखा था एंड काफी लोग इधर कि हाँ यार अस्थाना मेड। Yeah. So, एक कमेंट आया इट विल टेक अस इन द इम्तियाज अली यूनिवर्स, सो मैं कुछ सेकंड और लूंगा, शायद कुछ मिनट या कुछ साल और लूंगा. So, but like it's a super chat, so like yeah, we are getting to that 200 people are watching us now. This is lovely, and we have 213 likes, guys. This is good, great going. हिंडोल को if जल्दी से लाइक नोकियो पे फॉलोअर बता दो. मैं एक बार नोकियो के बारे में जल्दी से बता देता हूँ. लाइक ओके, लाइक यार लाइक सबको पता है नोकियो के बारे में. कितने लोगों ने पहले बताओ कि यूज करा आफ्टर माय लास्ट वीडियो, बिकॉज मैंने बड़ा दिल से बात की थी उसमें. And like I have been putting everything I watch on Nokio. I don't put my list anywhere else right now. It's just on Nokio. So आप लोगों को देखनी चाहिए. And हिंडोल को भी यहाँ पे आज एक बहुत ही शानदार वेरीफाइड अकाउंट मिल गया है. और वो अब लाइक हिंडोल एक्चुअली हैज बीन रिप्लाइंग अ लिटिल लेस टू मी एवरी डे, जैसे जैसे सोशल मीडिया पे वायरल होते जा रहे हैं. एंड लाइक इज लाइक क्या लाइक हिंडोल को मैंने आज ऐसे वॉइस नोट भेजा कि ब्रो लाइक कि सबसे यार नथिंग लाइक जस्ट चल रहा था मेरा कुछ. वैभव आप सो कुछ बोल रहे हो क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ लाइक सुनाई नहीं देता आजकल हिंडोल को, थोड़ा कम सुनाई देता है हिंडोल को. So yeah, but like yeah, I've been using Nokia. I've been putting all my recommendations there. चलचित्र के अकाउंट पे अलग है, मेरे अकाउंट पे अलग है, और मेरे को लगता है हिंडोल बहुत अलग देंगे जो हम देते हैं उससे, because he has a very unique taste and a very great taste. So सो you एक should बार like आप मतलब आई जेन्युइनली वांट टू नो क्योंकि मैंने आज ही ज्वाइन किया है। सो व्हाट ऑल एग्जैक्टली कैन आई डू ऑन नोकियो की मतलब मैं आई कैन कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव वॉच्ड, आई कैन रेट देम बट सो हाँ मैं हाँ आपको बेस्ट फीचर बता दूं जो मेरे को पता हाँ है. मान लो कि अपन चारों वहां पे हैं, राइट. लाइक हम्म, IMDb क्या करता है, IMDb पे लाइक आपको यूनानिमस लाइक रेटिंग मिल जाती है, समथिंग हाँ एज एन 8.9 रेटिंग और लाइक अ 6.2 रेटिंग. हम्म, अगर मान लो लाइक इफ आई जस्ट फॉलो वानी एंड लाइक दिशा, सो हम्म, अगर इन दोनों ने एक रेटिंग दी है, सो हम्म, मेरे को जब मैं किसी शो पे या मूवी पे जाऊंगा तो मेरे को सिर्फ वानी और दिशा की क्यूमुलेटिव रेटिंग दिखेगी. हम्म, एंड अगर आपने उसको 4 दिए बट लाइक बैंशीज ऑफ इंश्योरेंस को लाइक दिशा और वानी ने 9 दिए, हम्म, सो मेरे को वो 9 दिखाई देगी. इफ आई फॉलो यू तो मेरे को वो 4 दिखाई देगी. सो हम्म, इट्स वेरी मच फोकस्ड ऑन फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि वो हम्म, चाहते हैं कि यार अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में रिकमेंडेशन गेम प्रॉपर्ली खेलो. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई हैव बीन
actively speaking about it because it's like the perfect marriage. Because Chalchitra baby, we only like talk about recommendations, and like Nokio is also an app where you can do it. So yes, go and follow us there. Like superb app. इसलिए मैं इतना दिल से इसके बारे में lately बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ. So Hindol, I hope you got the answer. Yeah, I कुछ like jokes चल how रहा है आपके लिए. even in the hypothetical situation you didn't follow me. So yeah. Oh. नाइस नाइस नाइस. तो बात करते हैं लाइक और लाइक सीन्स की. तो मैंने Before, sorry. हाँ जी प्लीज. Before we move very further on, I want to talk about this scene from Zindagi Na Milegi Dobara. Because I'm just circling back. Because I realized वो मेरी list में भी था. But because Hindol also mentioned when she's a fencer and in breakups and friendship. I love the dynamic of Farhan Akhtar and Hrithik Roshan as you start out and then they make up and everything. And then jab Kalki Koshin crashes. I don't know. I'm sorry, I'm Kalki fumbling a Cochin lot. crashes. Like this is nice. She Kalki crashes Cochin the crashes. bachelor trip, and now she's going back. And she's going back and she's gone to change in the midst of a field, and वो तीनों friends खड़े हैं, and it's just their sense of humor has come together, and बीच में अबे देओल खड़ा है and they're like अच्छा कहाँ कितने दूर हैं ये वो flan ढिमकाना, and he's like हाँ airport आ ही जाएगा, and then she comes out and then she starts singing this song. I'm a rock chick in a hard rock, and I just love that scene because all of a sudden some like the two of them warm up to her because they just realize okay she's just another chick, and that's my favorite scene. एक like a very bad brain fart, but like Saurav, if you're watching it, मेरे को एक idea है. Can you quickly make a YouTube channel called Fulana Dimkana? I think it's a very good name. No, sorry, like genuinely, it's a great name for a YouTube channel. Like, please subscribe to Fulana Dimkana. Yeah. Just saying, यार yeah. जल्दी बना लो इससे पहले कोई और ना कोई बना और ना बना दे. पता Edit on चले the live. Fulana Dimkana. नहीं फिर फलाना वो सब डिमकाना. करना पड़ेगा फलाना ढिमकाना 4 फलाना फलाना डिमकाना. Nice. Well, like there is a super chat by Mr. Nobody. What do you guys think of Rockstar and Tamasha? I didn't like the first time. I liked it when I rewatched. And like Pursuit की अभी बात नहीं करेंगे, but इनकी करेंगे. Guys, मैं पानी पी के आया. So I love that chutney scene in Rockstar. Yeah. With chutney scene. इसी So की चटनी में this दो is like मेरा दिल टूट के आया है. Sorry, Uh-huh. please go. Yeah. I have a scene from Rockstar in my list. तो मैं वो तब तक फिलर के लिए वही बता देता हूँ. So it's the जो ट्रैक में अगर आपने एल्बम सुना so it's the track Dichotomy of Fame जिसमें शहनाई है and गिटार है. So मूवी में आपको याद होगा शमी कपूर is playing शहनाई and Oh yes, रणबीर dude. कपूर That is is actually a good scene. वो क्योंकि वो Shania is the one which ऐसे हाँ uplifts the and scene. it's a genuine conversation. आप उस सीन को ध्यान से देखोगे ना तो वो मतलब I don't know if I'm reading too much into it because the name of the track is this, but it's like एक सीनियर आदमी एक जूनियर को बता रहा है कि ये सब होगा तुम्हारे साथ जीवन में, like these are the emotional things that you are going to go through. And जब एल्बम आया था रॉकस्टार का तो obviously everyone was listening to Kun Faya Kun and all those things. This was a surprise to me जब मैंने थिएटर में देखा and I legit cried in this scene. I don't know why मुझे कुछ मतलब I don't know what connected but I cried when I saw that scene. तो That's काफी actually a great scene. बढ़िया सीन है. So, मैं कुन फाया कुन में भी I am pretty sure I'm capable of crying in that scene. कुन फाया कुन की एक तो like the filming is very strong. yeah. I also like that scene where Shami Kapoor's character meets, like finally they meet in person, Yeah. and he calls it "अच्छा वही हो जो तुम तो ना बजाते हो." हाँ. Not तुम तो ना, but like he calls this something, Yeah. and I really like with the understanding of a senior artist, Shami Kapoor goes like, "Yeah, ठीक है, कोई बात नहीं." And like may I also mention कि there are a lot of things I love about Imtiaz Ali also. Love आजकल में there is this montage where you see कि सैफ is very lonely, उसका ब्रेकअप हो गया है, वो सेम चीजें 10 चीजें बार बार करता है, वो घर आके गेम खेलता है, वो एक ही लोकेशन से जाता है, वो मीटिंग में जाता है, घर आके गेम खेलता है, वो खाना बनाता है, and then you see him aging, and then you see him the boreat getting to him. It's such a nicely done montage. Do you guys remember this? Yeah. Love So, आजकल में the one thing that I keep going back to always is the song आज दिन चढ़िया and उसका जो video है मतलब top एकदम everyone is at their A game and it's मतलब वो जो ना pure love जिसको बोलते हैं कि like genuine pure liking love तो बहुत मतलब बढ़िया गाना. So it's like I even like the end wala scene where she's on that she's working on the site and she's up in
in that contraption. I don't know what it's called. Yeah. And वो पीछे से आके चिल्लाता है and she's just crying and she's not responding to him whatsoever. और वो धीरे धीरे नीचे आ रही होती है. I really like that scene. Yeah, Nice. me too. I Actually, I want had that scene in my pre-list before the finalist. I had that scene where she's yeah. just crying and coming niche because she realized, okay, he's finally come back. Yeah. There's this comment about Pathik's deep dive into lyrics of Rockstar. So Pathik has been like killing it with his videos lately, and हमेशा like Pathik जब भी मैसेज करते हैं आदाब आता है उनका ऐसे मतलब फील में आ जाता है कि हाँ I'll have a great day today. So Pathik के आपको deep dive का season 2 देखना चाहिए किताबी cabins पे, and like the Rockstar video is actually very nice. Which is your favorite like deep dive video by Pathik, guys? Lootera. Lootera. Okay. मतलब वो डीप डाइव नहीं है बट पर्सनल बायस है द जिंदगी ना मिलेगी Oh दोबारा वाला जो yes. वीडियो था उसपे you also worked with him, no? हाँ तो वो एडिट There is, मैंने किया था एंड उसने लिखा था तो लाइक I उसमें think मेरा जेन्युइनली उसपे एनालिसिस बहुत सही था top comment है. I had हाँ commented on that video that until date this is my favorite video on Chalchitra Talks. I remember commenting on that video. Yeah. आई रिमेम्बर हमने जोया अख्तर को भेजा था एक दिन ऐसे ही Yes, I sent it to Zoya Akhtar. Yes. मैंने पता है डीप डाइव अभी इम्तियाज अली को भी भेजा था, ये जो जो पथिक ने अभी बनाया था. He has done multiple इम्तियाज अली films, no? यस इम्तियाज अली की क्योंकि हर फिल्म में उनके म्यूजिक इतना अच्छा होता है ना कि Yeah. मतलब यू कैन ऑलवेज गो बैक टू इट नो मैटर लाइक रिगार्डलेस ऑफ हाउ द फिल्म इज सो या काफी Yeah. बहुत प्यारा एक कमेंट आया है. माहौल बहुत अच्छा है. कैन वी नॉट डिस्कस ओके सॉरी ही इज लाइक मेरे को लगा कैन वी डिस्कस तमाशा. या सो मतलब तमाशा तो है बहुत I don't इंटरेस्टिंग have a favorite scene from Tamasha actually. तमाशा में वो टॉप व्यू वाला जो आने अपन ने रेप्लिकेट किया था. That is very nice. You No, I said I don't have a favorite scene from uh, Tamasha. माय फेवरेट इज द ओपनिंग जो वो पूरा चली कहानी वाला जो सीक्वेंस है ना क्योंकि एक तो गाना इतना बढ़िया है कि लाइक द फर्स्ट व्हेन आई लिसन टू द सॉन्ग जब एल्बम आया था लाइक कि आई डोंट केयर अबाउट एनी अदर सॉन्ग आई वांट टू सी हाउ दे हैव डन दिस सॉन्ग इन द मूवी मैं सिर्फ उसके लिए गया था देखने एंड इट इज डन वेरी वेल तो काफी वो था एंड इनफैक्ट अभी जब इम्तियाज वाला लिखना था वीडियो तो आई रिवॉच्ड ऑल हिज मूवीज एंड आई वाज लाइक यार मेरे को अच्छी लग रही है तमाशा सो या दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट राहुल देसाई से प्लीज बात करो उनके वो अच्छी लग. इट्स अ थिंग ना मतलब. I think we missed a super chat. Huh? We did? Yeah, I think it had something to do with Nawaz. Okay, yeah. So Nawaz is Uddin Siddiqui in इन अनवर का अजब किस्सा है ये बुद्धदेव दासगुप्ता की फिल्म है आई हैवंट सीन इट अनफॉर्चुनेटली बट लाइक ग्रेट मैंने भी नहीं देखी. Which is tell us about it. सो बुद्धदेव दासगुप्ता इज लाइक वन ऑफ जो मतलब इंडिया में जो डेविड लिंच स्टाइल थोड़ी फिल्म मेकिंग करते हैं उस लीग में है वो थोड़ी सरियलिस्ट उनका काम है Yeah. एंड हिज डॉटर इज अलोकनंदा दासगुप्ता हु डिड द बैकग्राउंड स्कोर फॉर सीक्रेट गेम्स एंड अ लॉट ऑफ अदर शोज एंड मूवीज तो वो काफी मतलब अभी मचा रही है. मेरी एक ऑब्जर्वेशन है which has nothing to do with this, but दिशा हीन के फैंस के पास पैसा बहुत है यार. सब सुपर चैट देंगे. हाँ दिशा हीन का बोल रहा है ये लो 500 रुपए दे ये लो. Disha is like Era Fairy 3 मतलब everyone is Yeah. So okay, unpopular opinion, Chichore Derek entrance scene. हाँ yeah चिचोरे बढ़िया मूवी है चिचोरे में so there's this one character डेरेक जो वो है मतलब he's like the cool senior तो उसको थोड़ा सा वो बिल्डअप देते हैं कि मतलब डेरेक ऐसा है डेरेक वैसा है पूरा उसको बिल्डअप देते हैं एंड देन फाइनली ही गेट्स एन एंट्री. तो जैसे अगर आपको याद हो गली बॉय में जो फर्स्ट सीन था जब विजय वर्मा वो पॉकेट में हाथ डाल के चल के आ रहा है तो मतलब थोड़ा सिमिलर वाइब है एंड लाइक काफी किक-एस वो सीन था. तो चिचोरे इज लाइक अ वेरी अंडररेटेड मूवीज to watch with your friends. मतलब that is one movie you should watch with your friends. So yeah. Can I like take like अभी हमें बहुत like 1 घंटा हो गया so मैं like जल्दी करते हैं कुछ. हाँ. Can we just like take a moment to appreciate RRR interval scene? मेरे को यार आज भी याद है कि मैंने कहा ये क्या मजाक चल रहा है यार ऐसे थोड़ी बना सकते. Because I wasn't expecting कि यहाँ ले जाएंगे सीन को. Like ट्रूएस्ट इमोशंस निकले थे क्योंकि आई वुड हैव थॉट कि ओके एंड में कुछ खोएगा वगैरह कि आई नेवर थॉट कि इतना वाइल्ड चले जाएंगे. एंड है एक अलग फैन बेस है आरआरआर इंटरवल सीन का.
लोग चेकऑफ्स गन बोलते हैं, मतलब चेकऑफ जू था पूरा। ओ या मैन, पूरा चेकआउट जू दे दिया उन्होंने। And I remember the day I had seen it, उसके like अभी फिर जब Netflix पे भी आई थी, my parents hadn't seen it तब तक, तो मैंने मेरे को कहा कि यार आपको कुछ दिखाना है, so like because they were like कि यार आर देखेंगे, मैंने कहा यार आप पहले ये सीन देख लो, so बिग फैन ऑफ दैट सीन। जितने भी उसमें एक्शन सीन्स हैं ना, दोनों की जो ओपनिंग सीन्स है वेयर यू सी द इंट्रोडक्शन ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स, हाँ यार लाइक है, मतलब प्रॉपर शॉर्ट फिल्म्स के जैसे वो सीन बनाए, सो लाइक देखने चाहिए आपको वो सीन। सो समवन कमेंटेड लाइक रॉकेट सीन का भी मैंने एक सीन लिखा हुआ है, एंड मैं क्विकली एक दो और मेरे सीन्स लेना चाहता हूँ जिसके बारे में लोगों ने बात की है। पहले किसी ने कमेंट किया था विशाल भारद्वाज की, वी आर नॉट टॉकिंग इनफ अबाउट विशाल भारद्वाज। हैदर का बिस्मिल वाला जो सीन है, हैदर का इरफान एंट्री सीन मैं इतनी बार चला के देखा है ना, लाइक व्हेनेवर आई फील लो, मैं हैदर इरफान एंट्री सर्च करता हूँ, मैं वो देखता हूँ बैठ के। That's amazing. या हैदर का वो सीन, उससे मेरे को याद आया, विक्रम जब मैंने देखी थी उसके बाद मैंने अभी विजय सेतुपति एंट्री सीन जब लिखा था, ओ भाई एंट्री सीन्स लाइक भी के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, कैरेक्टर एंट्री सीन्स। तो जैसे ये विजय सेतुपति का लाइक विक्रम वाला हो गया, और द अदर वन, सो एंट्री सीन्स आर आल्सो वेरी, या देयर। कोई कमेंट्स में भी हमें बताओ व्हिच इज योर फेवरेट कैरेक्टर एंट्री सीन कैरेक्टर गाइस। एंट्री सीन। हाँ मैं हूं ना। Oh, मैं Mehuna is a very good character entry scene. Yes. Yeah. इन ऑल्सो रिमेम्बरिंग शाहरुख खान एंट्री इन कल हो ना हो, जब पूरा वो प्रेयर हो रहा होता है, लाइक घर में वो लोग ये कर रहे थे, ओ गॉड पूरा कभी खुशी कभी गम also when they're praying now. और कलोना में फिर I होता है like कि Geet's entry in Jab We Met. She गीत climbs एंड Oh, सीन the, अभी मैं, यस यस। व्हाट्स द एग्जैक्ट सीन मेरे को बताना वो एक बार। ट्रेन में अच्छा, जब गिर वो एकदम जाती से आके बैठ जाती है। ओ yeah. नहीं एक्चुअली वो सामान पास करती रहती है, एक तो एक हमें करके सिर्फ बैग आवाज देखती है। सुनाई दे रही है, बट वो आती नहीं, फिर एंड में वो आती है। हाँ, फिर वो ट्रेन में आके बोलते हैं थैंक यू बाबा जी, आपने रिकॉर्ड बचा लिया मेरा। या I want to talk about Tare Zameen Par also. या Like, there's this. You hate the father in the entire movie, but there's this scene where I don't remember the name of the kid. He's reading. He's trying to spell out the word. दर्शील, The Darshil Safai. That was the actor. I don't remember the name of the character. क्या नाम है लाइक ईशान अवस्थी। हिंडोल इज लाइक, आप मेरे से पूछो ऐसे, So, आप Ishan is ऐसे इतना reading. लेट बैक लुक क्यों दे रहे थे हिंडोल? हाँ बताता हूँ। अरे नहीं मुझे कुछ और याद आ गया। अरे बिकॉज वी हैड यूज्ड ईशान अवस्थी इन सम स्क्रिप्ट एंड उस पे झगड़ा हुआ था कि किसी को समझ में नहीं आएगा, देन आई सेड कि नहीं सबको समझ आएगा, एंड नाउ कट टू। ये मेरे को हमेशा दर्शील सफारी याद रहता है, शान हाँ। ऑब्वियसली नहीं रहता। या वानी सॉरी कंटिन्यू। So Ishan is trying to read out something on the notice board, and the father is watching him, and वो अपने हिसाब से I think the word is auditorium, and he's spelling it out, and the father just looks at him and he cries, and then he leaves without meeting him, and I just love that scene. टू सीन्स फ्रॉम तारे जमीन पर व्हिच मेड मी क्राई। पहली बार जब आप उसकी बुक देखते हो जहाँ पे उसने मोशन एनिमेशन की होती है, होली शिट दैट, एंड एंड में जब तू धूप है तू छावेगा, जब वो ऐसे लेके ऐसे जो एक वो क्या बोलते हैं उसको, देयर इज दिस वर्ड ना, जब अपन स्क्रिप्ट्स लिखते हैं तो एक वर्ड होता है, फैन होता है कैमरा पूरा ऐसे, नहीं जो म्यूजिक में आप जो एक चीज करते हो कि आप ऐसे पूरा हाई लेके जाते क्रिसेंडो हो, क्रिसेंडो, द क्रिसेंडो व्हिच कम्स व्हेन यू फाइनली सी हिज पिंट। मैं जो रोया था, मैं ऐसा बेचारे जमीन पर मैं भी नहीं रोया था भाई। हैव यू गाइस सीन बेचारे जमीन पर? क्या मंदिर का घंटा हूँ मैं, एम आई अ टेंपल बेल? सॉरी आई हैड टू गिव इट अ शाउट आउट, लाइक इट्स अ वेरी गुड फिल्म बेचारे जमीन पर। बट तारे या लाइक जमीन पर पे एक थोड़ा छोटा सा एक ट्रिविया बता दो तो आमिर, सो देयर इज दिस ग्रेट पॉडकास्ट सीरीज जो सावन पे है, अनुपमा चोपड़ा और इनका दाराजी मिशन का, टेक 2 नाम था इसका। सो इट हैड अ लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट। तो आमिर खान है एक एपिसोड में वेरी इज एक्सप्लेनिंग व्हाई ट्रायल स्क्रीनिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो जब वो लोग ट्रायल इसका तारे जमीन पर का ट्रायल कर रहे थे, एवरीवन केम आउट ऑफ द मूवी एंड सेड कि ईशान को स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए, नॉर्मल स्कूल नहीं भेजना चाहिए। एंड देन आमिर खान वाज लाइक कि ये इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट मैसेज है, ये क्यों जा रहा है? And then they kept taking feedback, and they realized it was one shot that was making them feel like this. तो जो वो वाला गाना है, जो तारे जमीन पर गाना है, उसमें there's that part where आमिर खान is watching उसके स्कूल के बच्चों को परफॉर्म करते हुए उनके एनुअल डे पे, एंड ही इज मतलब वो रो रहा है एंड वो लाइक ही इज क्लैपिंग फॉर देम, एंड वहां पे क्या था, एक डिसॉल्व होता है कि आमिर के फेस से दर्शील के फेस पे जाता है।
And because of that one shot, people were thinking कि इन दोनों को स्पेशल स्कूल में होना चाहिए. And when they removed that scene, people stopped saying कि इसको स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए. He should be in a normal scene. मतलब एक छोटे एडिट कॉल से पूरा आपका फिल्म का Yeah. चेंज हो गया. So, yeah. Hindol की तारीफें हो रही. Hindol is a huge story buff and that is so inspiring. Thank you so much. Yeah, thank you. Like Hindol कैसा लग रहा है? बस Yeah, like guys, like तारे जमीन पर के बारे में like मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है like जैसे लोग कह रहे हैं we haven't talked enough about संजय लीला बंसाली. So can I give my एक संजय लीला बंसाली का शीशे से शीशा टकराए वाला जो भी उसको मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है उसकी फिल्म. वो जब ट्रेन में होते हैं like ट्रेन में ही होते हैं ना तब वो. हाँ हाँ, ओ हो. और वो जेन्युइनली वो परदेसी को जैसे वो किया की वजह से करे जा रहे हैं वो लाइक ऐसे एक के बाद एक चक करे जा रहे हैं लाइक शीशे से शीशा टकराए की फिल्मिंग एंड लाइक दैट सीन इज समथिंग व्हिच Devdas mein there is one great scene which is the funeral scene. जब Devdas's father dies and he comes drunk to the funeral. And वो book में नहीं है, वो original story में नहीं है. It is from Sanjay Leela Bhansali's own life that his grandmother had passed away and his dad showed up drunk to the funeral. And वो पूरा उन्होंने वहाँ से लिया है. And every time he talks about that scene in interviews, मतलब एक बहुत वो personal. I really like this thing कि वो मतलब अपनी लाइफ से चीजें लेते हैं एंड मतलब इतना रॉ फॉर्म में उसको डाल देते हैं. जैसे या मैन I don't know if you guys have seen गंगूबाई, but गंगूबाई का जो एंडिंग है where like she is उसको पूरा ले जा रहे होते हैं वो कामाटीपुरा से and she is passing through like all the characters वगैरह. तो एंड फ्रेम जो है उसमें वो she is passing through a theater and एक ऐसे पीछे पोस्टर लगा होता है एक फिल्म का जिसका नाम है जाजी लुटेरा. जाजी लुटेरा संजय लीला बंसाली के फादर ने प्रोड्यूस की थी एंड वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी एंड बिकॉज ऑफ दैट द फैमिली had to like they went into poverty. So it's like it's to his father. तो मतलब बहुत oh man सही. Nice. a lot of people have also been writing about Guzarish like I have a recommendation from Sanjay Leela Bhansali film. yeah please राम लीला इज संजय लीला yeah. या सो उसमें वो जो पार्ट आता है जब वो भाग जाते हैं उसके बाद उनको वापस लेके आते हैं एंड दीपिका का मजाक बनता है. तो उसके बाद आफ्टर ऑल दैट लाइक her mother she snaps off her fingers जिसपे उसने उसको रिंग पहनाई हुई होती है. फिर उसके बाद दे मीट टू like negotiate a deal or something. And usme they are meeting each other for the first time after this whole thing happens. And both of them look so sad, but they're trying to keep a strong face. And वो उसको बोलती है कि दुश्मन से मोहब्बत करना सबके बस की बात नहीं है या कुछ. वो मुझे बहुत पसंद है that scene. Then he takes a selfie. We were talking about Bajirao Mastani and everyone talks about how Priyanka Chopra nailed that scene where she's like, "Aapne to hamara guru chhin liya." But immediately after that scene, she's lighting off the lamps and Ranveer Singh takes that over because she's told him कि आज से मेरे कमरे में कभी मत आना and everything. And Ranveer Singh is fighting back his tears and he's trying to blow off the lamps. Yeah. I think that's such a beautiful, beautiful scene and lovely performance by obviously Ranveer Singh and Priyanka Chopra. Ranveer Singh's sad face always gets me because he's always traditionally doing characters that have a lot of energy and are happy and stuff. फिर जब भी sad होता है, it really catches me off guard. Right. Yeah. So, do you guys have more Sanjay Leela Bhansali recommendations? Because मेरे को संजय लीला बंसाली हाँ तो संजय लीला बंसाली अगेन सावरिया बहुत लोगों को नहीं पसंद है बट मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार प्लीज गिव दैट मूवी अ चांस एंड वॉच इट विद एन ओपन माइंड. एंड उसके बाद सावरिया की मेकिंग है यूट्यूब पे मुझे कल ही मिली है तो 1 घंटे की मेकिंग है पूरा बैठना बैठ के देखना काफी अच्छी मेकिंग है. तो प्लीज फॉर दैट मेकिंग यू हैव टू वॉच दैट मूवी सो प्लीज डू दैट. Yeah. Again going into a completely new universe, but the universe is called Anurag Kashyap, and I want to talk about my favorite scene from Black Friday. It's actually a long montage scene जहाँ पे पीछे गाना बज रहा होता है भरम बाप के where you see what's the name of the actor वो जो CID वाले हैं Aditya Srivastava is traveling through India क्योंकि दाऊद और टाइगर मेमन उसको परेशान कर रहे हैं and he's trying to figure out, he's just trying to get through every day and उसकी जो frustration दिखाई है ना उस monologue में
उसके पास पैसे खत्म हो रहे हैं, दाऊद उसका फोन नहीं उठा रहा, एंड ही डजंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट. उसको प्रॉमिस किया गया था कि आफ्टर डूइंग व्हाट ही डिड ही विल बी टेकन टू दुबई, बट अब उसको दुबई नहीं लेके जाया जा रहा. और Yeah. आई रिमेम्बर दैट यार. एंड लाइक वो एंड एक पार्ट आता है जहाँ पे ही लूजेस इट, हाँ और फिर वो गुस्से से बोलता है मैं यहाँ भागे जा रहा हूँ, कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा. एंड लाइक देन यू सी हिज आईज आल्सो, मतलब उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है. एंड हाँ मेरे दिमाग में भी ना पूरा भरम आपके चल रहा है, लाइक क्योंकि it's one scene, one of my favorite scenes in the whole Anurag Kashyap Yeah. universe. Yeah. दीक्षांत ने एक सीन मेंशन किया, मैं इसी के बारे में बात करना चाहता था. दिस इज द सीन वेयर टाइगर मेमन का ऑफिस जला देते हैं, एंड यू रियलाइज हाउ ग्रेट एन एक्टर Pawan Malhotra is, oh कि my god. उसमें वाइड फ्रेम है, यहाँ पे गली है, यहाँ पे ऑफिसर कुछ Yes. चल रहा है, एंड वो गाड़ी स्पीड में चला के, जिस स्पीड में वो गाड़ी चला के आया ना, वहीं से उसका गुस्सा दिखता है कि ये आदमी फटने वाला है. एंड देन ही गोज इन, ही सीज द ऑफिस, एंड देन जब वो पूरा आके चिल्लाता है कि कौन जलाया ऑफिस, पूरा दैट सीन. एंड पवन मल्होत्रा की बात करते हुए, व्हेन ही फर्स्ट मीट्स आदित्य श्रीवास्तव का जो कैरेक्टर है, और उनसे पूछता अकेले जब वो रूम में बैठे होते कितने लोग मारे तूने, जब वो रिलीजन का नाम लेके जब बात कर रहे होते हैं, अच्छा इतने मारे, और लाइक आइस के साथ जो जो करते हैं ना वो डैम नाइस. सो ब्लैक फ्राइडे मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स मेड इन लाइक इंडियन हिस्ट्री. इंडियन सिनेमा में उस लेवल की बहुत कम पिक्चरें बनी हैं. सो या so that is one Anurag Kashyap Bharat ka. has a great observation on your scene. Yeah. सॉन्ग में so there's a dog जिसको एक बंदा नचा रहा होता है, and वो मतलब उसका एक वो पैरेलल होता है. Oh. Yeah. No, what other like Anurag Kashyap scenes do you guys want to talk about? चाबी कहाँ है बताइए guys. Yeah. So I like that scene where he asks for consent. Nawazuddin Siddiqui का character. Yeah. हाँ, काफी सही सीन है. It's a very very good scene. Yeah. मैंने वो रखा था, सुल्तान का मर्डर रखा था वासेपुर से, बिकॉज इफ आई अगर किसी ने वासेपुर नहीं देखी, मैं सिर्फ वो एक सीन दिखा दूं ना लोगों को, दे विल गेट द एंटायर मूवी कि भाई क्या है ये. मतलब मर्डर प्लानिंग हो रही है, एक बंदा वहां पे बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, एक बंदा यहाँ पे 3 फोन लेके बैलेंस कर रहा है. इट्स अ ग्रेट सीन. And that Tigmanshu Dhulia scene where the guy has been, Vipin Sharma has been called. अच्छा कहाँ गाड़े थे, कहाँ गाड़े थे. मैं उस लेवल का कर्स नहीं कर सकता, बट लाइक भावनाएं समझे. अब तो सच बोल दे. बीप बीप बीप. वासेपुर में every रामाधीर line is so quotable. There's that one scene where they kill a random guy and उसका बच्चा वहां पे होता है, तो वो बच्चे को उसे गोद में लेता है, उसी के बाप का खून लेके उसको तिलक लगाता है. Oh बहुत yes. बड़े आदमी थे तुम्हारे पिताजी. Every actor who In Vasipur. was in Gangs of Vasipur has made it big or has got his own film or has own show. जयदीप अलावत ले लो, राजकुमार राव ले लो, पंकज त्रिपाठी ले लो, किसी को भी उठा लो. It just made their life. So है Gangs of Vasipur universe में वो बात है. And other like Anurag Kashyap films also यार, like देवडी में भी again like I have too many favorites. And like वो visually जो खेला है उन्होंने उसमें, the way the women like emasculated him, जो पारो उसको चीजें बोलती थी, काफी खतरनाक था वो भी. The police station scene in Ugly, man, क्या scene था यार. So वो भी काफी सही था. Ugly like is not one of my favorites. I'm sorry. Yeah? Ugly like Ugly नहीं पसंद आई थी मेरे को इतनी. मतलब a lot of people like keep it on par with Black Friday. मतलब काफी लोग बोलते हैं Ugly उनकी favorite film है, but yeah. वो नहीं, Ugly I don't know like great ending and everything, but it didn't work for me. And गुलाल की इतनी बात हो रही है. गुलाल has such like amazing scenes. So yeah, the whole Anurag Kashyap like universe, we can keep talking about it. But like yeah, but हमारे पास like we are also running out of time. And like जल्दी से मैं लाइक 2 और सीन्स की बात करना चाहता हूँ. लाइक देन लाइक मैं सब कुछ लाइक सब अपना एक अपना लाइक मोनोलॉग पार्ट करते हैं. लाइक जब सब अपनी फास्ट रिकमेंडेशंस देना, एंड यू कैन टॉक अबाउट इट. आई विल टेक माय मोमेंट टू क्विकली टॉक अबाउट फरहान अख्तर.
अगेन दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज है बर्मुडा ट्रायंगल, एंड सेकंड बिगेस्ट मिस्ट्री है कि फरहान अख्तर इतना डायरेक्ट क्यों नहीं करते, राइट? आई थिंक ही शुड डायरेक्ट लाइक अ लॉट मोर ऑफन बिकॉज ही इज अ ग्रेट डायरेक्टर. फरहान अख्तर का जो दिल चाहता है का एक सीन है जब वो एक दूसरे पे सब पेंट फेंकते हैं, and like again the way the guy knows and understands how to show friendship on screen, it's a great thing. I think हिंडोल ने अभी like चलचित्र के सोशल मीडिया पे वो उन जब वो शादी हो जाती है कॉलेज उनकी से जा वो रहा है, कॉलेज से जा रहे होते हैं and he sees यार मेरे दोस्त वो वाला, it's a great scene. and in लक्ष्य मूवी जब वो प्रीति जिंटा के डैड से मिलते हैं और जब वो घास काटने वाला डिस्कशन करते हैं, बेटा घास भी काटो तो अच्छा घास काटो तब कोई बात है नहीं तो लाइक इट मींस नथिंग. सो एंड देन वही जाके वो लाइनें बाकी लोगों भी यूज करते हैं. अरे लक्ष्य में there's मैं that तो सीन ना जब वो उसको कॉल करती है प्रीति जिंटा लाइक आफ्टर ही इज बिकम अ सोल्जर एंड शी लाइक क्या हम मिल सकते हैं, देन ही लाइक हमें नहीं मिलना ये तुमने डिसाइड किया था, अब कब हमारे लिए मिलना है वो अब मैं डिसाइड करूंगा. कि हमारे लिए सारे फैसले तुम नहीं ले सकते. मतलब काफी अच्छा सीन था, काफी काफी सही सीन था. लाइक इट मेड ऑल द बॉयज वेरी हैप्पी. So just wanted to take a moment to quickly talk about Farhan Akhtar also, and on my list there Aligarh के बारे में जो bedroom में एक drinking scene है where like he goes into that zen जहाँ पे it's a very Philadelphia kind of a scene. जैसा अगर आप लोगों ने फिलाडेल्फिया देखी हो तो उसमें भी एक ऐसा सीन आता है जहाँ पे वो ट्रांस में चले जाते हैं मनोज वाजपेयी, वहाँ का एक सीन है. कभी ना कभी ना का एक एग्जाम सीन है when शाहरुख fails the exam and they still throw the party. That is like a scene that I really like. Every scene of the movie October which had Gitanjali Rao in it, and like मैंने October Mother सबसे पहली चीज गूगल की थी after like watching like the movie, and फिर मेरे को पता चला Gitanjali Rao is a very stud filmmaker also. She's a great filmmaker. And I also want to talk about the end scene of like Rocket Singh. Rocket Singh has like a lot of great scenes. I'm like really sorry, but what's the name of that actor, the villain in Rocket Singh? मनीष Hindol? चौधरी. मनीष चौधरी, the look that he gives, गाड़ी में बैठे होते हैं, आई थिंक विंडशील्ड चल रहा होता है और वो देखते हैं लाइक वो सुपरमार्केट में होता है रॉकेट, एंड फिर उसके साथ जो कन्फ्रंटेशन है. मनीष चौधरी इज अ ग्रेट एक्टर, सो आई आल्सो वांटेड टू क्विकली टॉक अबाउट दैट. एंड लक बाय चांस के भी बहुत सारे सीन्स हैं जो मेरे को बहुत पसंद है. लक बाय चांस की इवेंचुअली जो फाइनल वॉक है where Kongana Sen hasn't made that big in life, but she is like kind of okay with it now because she did it on her own terms. So जो पूरा voice over चल रहा होता है, जो उनकी slow सी walk है where she kind of confronts the friend also, and she's like no, it's okay, मेरे को मेरा एक छोटे level पे मिल रहा है काम वगैरह, but I'm enjoying my Bombay life. So yeah, that's it. Great. Let's quickly move to Hindol. फट I think आप. you guys haven't spoken for long too. अरे यार आप बताओ, सब बोलेंगे लाइक सब ऐसे. नहीं हाँ, आप क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट सारे हो गए, मेरे 2 ही सीन बच गए थे, तो मैं जल्दी बोल देता हूँ. 2 नहीं 3 सीन. हाँ, एक है स्वदेश का काफी लोगों ने मेंशन किया जब मोहन फाइनली पानी पीता है. वो मतलब बहुत बढ़िया सीन है, काफी लोगों ने मेंशन किया चैट में, सो आई वोंट गो डीप इनटू इट. सेकंड इज इसमें कहाँ गया, हाँ कोई मिल गया का ये मैंने एक सीन रखा था जहाँ पे रोहित जाता है सॉरी बोलने उसको प्रीति जिंटा को, बट जो गुंडे होते हैं वो उसका स्कूटर तोड़ देता है. मैं बहुत रोया था बचपन में, अभी भी रोता हूँ सीन देख के. अरे कोई मिल गया कि सारे सीन्स में रोना आता है. कंप्यूटर वाला जो सीन है, कंप्यूटर लैब वाला सीन. हाँ, तो मतलब अगेन यू इवेंचुअली यू रियलाइज कि वो कंट्रोल भी बता रहा था उसको, बट उस टाइम पे लड़का क्या बता रहा है. और द बास्केटबॉल सीन ऑफ कोई मिल गया यार. वो तो फिर मतलब फिर फ्लबर देख ली, फिर रॉबिन विलियम्स देख लिया, तब क्या बोले. बट या कोई मिल गया, ग्रेट मूवी, प्लीज वॉच. I want to like just quickly give a shout out to the space the ship that they had made for the aliens. It was good. It was good. Yeah. Dude, imagine making a science fiction film for Indian mass audience and making it accessible. उनको समझ में आई पूरी फिल्म. मतलब है भाई, I am revisiting राकेश रोशन's old films like Karan Arjun and everything. मुझे काफी सही फिल्म मेकर लग रहे हो, तो वो है. एंड लास्ट एक मैं सीन बताना चाहता हूँ फ्रॉम रंग दे बसंती, बीच में बात हुई थी बट लाइक मैं बता देता हूँ. जो सिद्धार्थ का जो पूरा आर्क है ना, मुझे बहुत सही लगा था. एंड जो गाना तू बिन बताए में
मुझे पता नहीं, बचपन में हमेशा ऐसा लगता था कि सिद्धार्थ हैड फीलिंग्स फॉर सोहा अली खान कैरेक्टर, बट उसने कुछ किया नहीं इवेंचुअली, बट ऐसा मेरे को फीलिंग आता था। मेनी इयर्स लेटर मैं अभी ऐसे ही पढ़ रहा था रंग दे बसंती का ट्रिविया, तो ये था एक्चुअली प्लॉट में, दे हैड सीन्स वेयर ही वाज एक्चुअली लाइक लाइकिंग हर एंड स्टफ, बट वो काट दिया था उन्होंने एडिट में से। बट इमेजिन हाँ एक एक्टर की परफॉर्मेंस की 2 या 3 एक्सप्रेशन में आपने पूरा आपका बैक स्टोरी कम्युनिकेट कर दिया। तो सिद्धार्थ हैज डैम सम ग्रेट सीन। एंड रंग दे बसंती में खून चला जो गाना है, उसमें एक हाँ पर्टिकुलर मोमेंट आता है जब अतुल कुलकर्णी का कैरेक्टर होता है, जो देखता है उसके जो पॉलिटिकल मेंटर होते हैं वो ऐसे गाड़ी में चले जाते हैं, एंड देन ही जस्ट स्टैंड्स देयर हेल्पलेसली, और फिर वो डंडा उठा के पुलिस वाले को मारना स्टार्ट करता है। दैट्स अ ग्रेट, लाइक बोलते हैं कैरेक्टर आर्क इन वन सीन, तो दैट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर दैट। एंड रंग दे बसंती में देयर लाइक ड्राइव बैक फ्रॉम नाहरगढ़, जब लाइक स्लो हाँ एफपीएस रेट में शटर स्पीड हाँ में जब उनका जब तक वो ढाबे तक जा रहे होते हैं, सो लाइक इट्स ऑल्सो एंड द ओपनिंग लाइक क्रेडिट्स ऑफ like that like Rang De Basanti, एंड amazing. इट्स वन ऑफ दोज रेयर मूवीज व्हिच हैज सेपिया डन वेल, लाइक Yeah, वरना लोग bang सेपिया on. ऐसे ही डाल देते हैं, Good बट observation. बहुत अच्छा Yeah. उन्होंने यूज किया था। एंड स्पेशली जब वो ब्लेंड हो जाती है दोनों एंड में, कि Oh, ho, ho. आमिर खान डाइंग इन द पास्ट, आमिर खान डाइंग इन द प्रेजेंट, दोनों साथ में बैठे होते हैं, दैट वाज अ ग्रेट Yeah, मोमेंट एज वेल। yeah. दीस वर माय सीन्स। Amazing. Disha, Vani, who wants to go next? Like Disha? मेरे काफी है एक्चुअली। बताओ वानी, बताओ बताओ. Yeah. मैं शुरू करूं? Yeah, 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 yeah. ओके, तो अभी मैंने रिसेंटली, ये आई थिंक काफी फेमस हुआ है ये क्लिप। इट्स फ्रॉम दिस फिल्म कॉल्ड गुड बाय, अमिताभ बच्चन वाली जो आई है। Hmm. आई ट्राइड वॉचिंग द फिल्म ओनली फॉर दिस सीन, बट मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी। बट उसमें बेसिकली ये होता है कि आई थिंक उनका नाम पवेल गुलाटी है उस एक्टर का। हिज मदर passes away and he's very indifferent to the whole situation. He's in denial about it. तो ही डजंट लिव इन द कंट्री। वो आता है वापस अपनी वाइफ के साथ, एंड सब चल रहा है, फ्यूनरल वगैरह हो रहा है, बट ही इज नॉट एक्सेप्टिंग इट, एंड वो बिल्कुल भी ही इज नॉट अफेक्टेड बाय इट। और ऐसा सीन होता है कि ही इज इन हिज बैल्कनी और वो कुछ काम कर रहा होता है, ही इज टॉकिंग टू समवन ऑन कॉल, एंड नीचे से वो जो भेलपुरी वाला होता है वो आता है और वो बोलता है कि मम्मी जी को बुलाइए, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि शी इज पास्ड अवे। एंड वो बिना सोचे समझे मम्मी मम्मी बुलाता है, and he keeps doing it until he realizes कि she's not here anymore. And वो जो realization उसके face पे आती है, it is beautiful. And despite that, he keeps on calling her. And I really like कि कैसे उन्होंने वो बताया है कि there will come a time when you'll call someone for the last time. Stuff. Ah. बहुत रोई मैं वो सीन देख के, but the movie I couldn't get into it. Hmm. वो छोड़ के और did we do? I like the scene in Barfi when Elena de Cruz comes back into his life और वो उसे घर लेके जाता है और इससे मिलवाता है प्रियंका चोपड़ा से। एंड वो एकदम साड़ी में सच के बहुत शायलिया कैसे नमस्ते करती है, एंड शी सीज हिज एंटायर लाइफ एंड हाउ सी शी रिग्रेट्स लीविंग हिम। आई रियली लाइक दैट। मेरे को एकदम से existential crisis, वो कहाँ गई लेना डिक्रूज? Where is she? वो है कर रही है। Yeah. Also the scene where he's doing the night lamp falling wala test with everyone, and then he does it with Priyanka, and her gestures in that moment are so perfect for her character who has autism, I think. Very beautiful. फिर मसान का वो बहुत फेमस सीन जहाँ पे वो फोन पे बात कर रहे होते हैं, उनका झगड़ा हुआ होता है, एंड शी टेल्स हिम कि मेरे पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको, बट अगर जरूरत पड़ी तो भाग भी जाएंगे, एंड देन ही कट्स द कॉल एंड ही स्माइल्स एंड किसेस द फोन। सो आई फील लाइक दैट सीन रियली हील्स यू, बट उसी के बाद हील होने से पहले जितने ब्रोकन थे उससे भी ज्यादा it breaks you. So that yeah, may I add something? पता है दिशा ने like अपनी लिस्ट में लिखा था मसान मेन सीन। मैंने कहा bro, ये काफी I thought subjective। everyone would put it in their list. That's why I was very surprised. नहीं तो मेरे लिए मेन सीन like 4 और भी थे, तो मैंने कहा कि main scene। आई थॉट वो मतलब वो रिंग वाला सीन होगा कि मतलब वो I thought जब वो This पहली was बार when वहाँ, he sees the ring on the body's finger, and आई थॉट वो सीन होगा। हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ, but वो continuation में वैसे
like the entire ये. और लाइक वो वाला कि ये दुःख खत्म क्यों नहीं होता वो, हाँ, या फिर ये एंड ना में दो जो वाली दोनों सीन मिलते हैं। मसान. The Yeah, whole thing, the full thing. yeah. फिर इंग्लिश में जब वो Oh अकेले yeah, ही ग्रेट सीन, कॉफी ग्रेट। ऑर्डर प्लेस करने जाती है एंड शी गेट्स वेरी एंग्शियस बिकॉज पीपल आर बीइंग इम्पेशेंट विद हर, और वो भाग जाती है वहां से. दैट वाज वेरी एंजाइटी इंड्यूसिंग, दैट सीन. oh What had man. happened with me today, एक आंटी थी मेरे सामने मेट्रो स्टेशन पे, एस्केलेटर वो चढ़ने की कोशिश कर रही थी, एंड ये जनरल एक है कि मतलब somehow people feel scared of escalator, lift वगैरह, Hmm. एंड वो बहुत पैनिक कर रही थी, like there were a lot of people trying to calm her down. तो I yeah, thank you for reminding me of that scene. मैं अभी देखूंगा स्ट्रीम के बाद. It's a Hmm. great scene. So yeah. Oh Yeah, shit. Am I yeah, there? Yeah, 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 yeah. yeah. Okay. Yeah. Uh, फिर गली बॉय में दैट सीन वेयर इन द एंड ही गेट्स सिलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड और वो घर आता है एंड हिज डैड इज बैक व्हिच इज विजय राज, राइट? विजय राजे. Hmm. हाँ, और वो उनका ये होता है, सीन होता है वेयर ही इज बेसिकली ट्राइंग टू कन्विंस हिम नॉट टू ड्रीम टू बिग बिकॉज यू विल गेट हर्ट. And you can see that he's coming from a place of having experienced that and he just wants to shelter his son even if it is very fucked up. So he love that. Or फिर वो he stands up for himself. Uh, Hmm. yeah, and in Talash, when Amir Khan goes to meet Kareena Kapoor in the hotel room, और वो उसे बोलता है कि मुझे सिर्फ बात करनी है और कुछ नहीं करना. He says it in a way जैसे लगता है कि बात करना is worse than कुछ और करना. और फिर वो जाके बाजू में he falls asleep. Love that scene. How much will you guys judge me if I say कि मैंने तलाश नहीं देखी, and how big a crime is that? काफी लोगों ने नहीं देखी है एंड इट्स अच्छा. कंप्लीटली फाइन, बट द बिगर क्राइम इज नॉट लिसनिंग टू तलाश's एल्बम. द बेस्ट, Yeah, काफी yeah. बढ़िया साउंड ट्रैक है, प्लीज लिसन टू इट. आई थिंक यू Hmm. विल लाइक इट. काफी थोड़ा जैज ब्लूज उन लोगों ने यूज किया. Hmm. Nice, nice. Nice. Yeah, Yeah, Disha, please go on. Yeah. Okay, हो गया okay. मेरा. Okay. Great. Okay, now let's move to Vaani. I also have a scene from Talash actually, and it's I think उसी के आसपास आता है where Kareena Kapoor tells in a very, I mean the way she says it कि यहाँ पर लड़की गायब भी हो जाती है और किसी को फर्क नहीं पड़ता, and the way she smiles after delivering that line, it was very haunting whenever I saw it. Hmm. उसके बाद I have this I don't think we ever spoke about Dhoom series, right? Dhoom 1 and Dhoom 2. Oh, Dhoom I का. Yeah. I Dhoom 2. Dhoom 2 is my favorite. And उसमें जब वो it's the very first चोरी in Bombay and he's Oh, masked himself as a one of those I was about to say this. statues and Oh everything. shit. That's like so vivid in my memory because whenever I saw it, I was like very young, and it is like it. It's a This is a great memory that scene. sits rent free in my head No, always. no, very nice. And apart from धूम that, धूम पे छोटा सा एक वो करना चाहूंगा. धूम 1 में जय दीक्षित जो कैरेक्टर था, मतलब दे डिड सच इनजस्टिस टू इट. इतना बढ़िया उन्होंने कैरेक्टर लिखा था कि उसको गुस्सा आता है तो चश्मा निकालता है, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स वर देयर. इतना अच्छा लिखा था. धूम 2 3 में इट बिकेम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. तो ये मेरा कंप्लेन है धूम सीरीज से. एंड व्हेन आई गॉट ग्लासेस, दिस वाज माय ओनली सेविंग दिस थिंग कि यार चलो अब मैं चश्मा उतार के मारूंगा लोगों. एंड देयर ऑफ कोर्स अली, अली इमेजिन करता है अपना लाइफ हमेशा, तो दैट इज Oh with God. him. वेरी रिलेटेबल. सो या Yeah. Right. I also want to talk about Highway, जिसमें आलिया भट्ट है. I Uh, love, there are so many scenes about that movie and it's shot in Himachal, so it's amazing. But last scene, you know, when she's screaming the name of hmm. whoever kidnapped her, like Randeep Huda's character, and then she realizes that he's dead. And when she realizes it, she's lost her hope, and that's visible on her face. I just love that scene. Hmm. And then I have this scene from Thappad, जो मुझे अभी-अभी stream के दौरान याद आया. Thappad was a really nice movie. Like I cried a lot in that movie, but she's been slapped, which is okay. Her husband has slapped her now, and now she has decided, and everyone is telling her, "Oh, it's okay, it's okay." इसमें कौन लड़ता है ये वो divorce की बात कहाँ से? And she goes back home, and her father recites some poem to her, and he sits down with her and comforts her, like whatever she's standing for is all right. It's going to be difficult, and that's all he wants her to know. And I love that scene between the father. I love the relationship that she shares with her father in that movie, basically. Hmm.
Yeah. कपड़ And में रत्ना मैम रिमाइंडेड मी अ लॉट ऑफ माय ग्रैंडमॉम लाइक द वे उन जिस तरह उनका पूरा मेकअप था एंड लाइक द वे शी वाज टॉकिंग बिकॉज शी चेंज्ड हर वॉक एंड लाइक फिजिकल डिमीनर फॉर दैट yes. मूवी एंड मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था बिकॉज लाइक शी हैड पास्ड अवे लाइक सम टाइम बिफोर आई सॉ द मूवी तो मतलब बहुत थोड़ा ये हो गया था सो या Hmm. And the last scene that I want to talk about is from the movie Queen. And it's just that one कि लाइफ इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया है। एंड देन शर्मा जी को देखो लाइक सुट्टा नहीं पिया, ड्रिंक्स नहीं किए, फिर भी लाइक कैंसर हो गया। व्हाट्स देयर इज नो फन इन लाइफ एंड एवरीथिंग। सो आई अच्छा लव कर ही लेते हैं। yeah, it's so कर ही लेते हैं। So there are, I don't like I think Queen is very overrated as a movie. I personally don't I didn't enjoy it so much, but there are 3 to 4 scenes which are beautiful, I think. And I think they made the movie what it was. And I think one of those scenes was this one. एंड अगेन मतलब बहुत लोग क्रेडिट नहीं देते हैं मतलब राजकुमार राव को बट इफ ही हैडंट प्लेड दैट asshole so well people wouldn't have rooted for Kangna so much in the Yeah. Mhm. yeah मैं या बट लाइक अमेजिंग रिकमेंडेशन एक मेरे को अभी अभी याद आया एंड लाइक आई वांट टू टॉक अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स फ्रॉम इंडिया दैट इज फारूक शेख सो फारूक शेख की पुरानी पिक्चरें तो बहुत सारी हैं ही साथ साथ एंड लाइक अ लॉट ऑफ दोज बट शंघाई मूवी में एक सीन है जब शंघाई में basically Abedel goes and like he knows what had happened, right? And he goes and confronts like Farooq Sheikh. और फारूक शेख कुछ खा रहे होते हैं आई थिंक वो लाइक मेरे याद है कुछ तो होता है लाइक सम फ्रूट और समथिंग लाइक पनीर और समथिंग और उनका मुंह ऐसे खुला रह जाता है लाइक ही इज लाइक डम्फाउंड कि ये हुआ क्या है बिल्कुल what the hell happened and then he still says something condescending like he's like trying to be like I'm still like good like मैं संभाल लूंगा so he says something भाई तेरे बस का नहीं है and yeah Supriya Pathak also did a great job like yeah in the way she played CM I was like holy shit this looks so realistic yeah so Shanghai is a film that like is very very good यू नो so मैन गंगूबाई का जब पहला ट्रेलर आया था ना द वे आलिया वाज स्पीकिंग इन द मूवी एंड का एक वो लाइन है जब वो कहती है कि हम तो इज्जत रोज देती हैं साली खत्म ही नहीं होती द वे शी सेड इट ना इट रिमाइंडेड मी अ लॉट ऑफ सुप्रिया पाठक मैंने उस टाइम में मैं बहुत hmm, लोगों को दिखाया था वो सीन कि ये देख के आपको किसी की याद आ रही है क्या एंड देन आई प्लेड अ सुप्रिया पाठक सीन एंड या yeah देयर इज अ सिमिलैरिटी तो and someone wrote like Rajiv Khandelwal. I am a big fan of the movie Amir also. या Amir is such a great film. So yeah, just wanted to like give that a shout out. And is this true what like Ajay Singh is saying? कहाँ पे Yeah. So नहीं नहीं अभी just अभी अगर अगर कोई बियर्डो या कोई कंपनी देख रही है तो गाइस प्लीज yeah. स्पॉन्सर हाँ सो बट दिस इज ग्रेट यार बहुत मजा आया एंड लाइक हम बहुत सारी आज मेहनत करके आए थे पढ़ाई करके आए थे एंड लाइक हाँ वी एंजॉयड दिस प्रोसेस लाइक वी वर शेयरिंग लिस्ट्स विद ईच अदर एंड दिस वाज अमेजिंग नेक्स्ट बताओ किस पे करना चाहते हो कि शुड वी डू फेवरेट मूवी सीन्स हॉलीवुड और should we do favorite TV show scenes? Like, tell us which one do you want us to do next in the comments. या And Hindol के 3x हो गए the last check I checked जो उनके जितने हाँ subscribers थे. So मैंने खुद yes, नहीं देखा हाँ he has had 3x subscribers and amazing है guys. Nokio पे please follow करो. यस हम लोग बहुत सारी हमारी exclusively अभी like हम वहाँ पे हमारी like list वगैरह डाल रहे हैं. Particularly मैं अभी like ऐसा letterbox भी use नहीं करता. So मतलब थोड़ी बड़ी बात है वो मेरे लिए क्योंकि letterbox is the thing but like I'm doing या it on Nokia and okay so some people are suggesting Hollywood movies and some people are suggesting series like Satyajit is saying brilliant तारक episode मेहता scenes yeah क्या हुआ फेवरेट तारक मेहता सीन्स किसी ने डाला है। favorite Tarak Mehta scenes yeah so do tell us in comments not in chat in comments जैसे कि बाद में भी और लोग आके देखते रहे आपका ऑल टाइम फेवरेट इंडियन मूवी इसमें से कौन सा सीन है और बताइए और आपको हम हमारी कौन सी लाइक इनमें से रिकमेंडेशन सबसे ज्यादा पसंद आई अमेजिंग गाइस दिस वाज लवली वील लाइक एंड द स्ट्रीम नाउ प्लीज लाइक करना जाने से पहले अगर अभी तक नहीं किया है तो and good 90 minute stream tight 90 minutes and like do you guys want to add anything before we end it Disha Vaani Hindol
खुश रहो, खुशहाल रहो, क्या पता कल होना क्या हो, पता कल है हो ना? ना हो. Yeah, that is we usually say. Yeah. Lovely. And like guys, हमने एक डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म भी डाला है. So yeah, like if you have filled it, you might have also gotten a call from me. So like वो feedback form like form please fill कीजिएगा. And बिल्कुल try to attack us. Like बहुत गालियाँ पड़ी हैं उसमें, हमें बहुत तारीफें भी हुई हैं. But like Disha is like shaking her head. I don't know why. But yeah, like वैभव, are there any अभी videos जो मतलब लोग देख सकते हैं? कुछ upcoming बढ़िया बता दो. upcoming videos, like we have some हाँ. amazing guest episodes. Like Hindol and I recorded a beautiful like guest episode with Sudhir Mishra, the filmmaker. हमारा उनके साथ क्या रिकमेंडेशन दिए हैं यार उन्होंने, मतलब फील ही आ गई थी. Yeah, so that is lined up. Like Vaani has recorded a lot of videos. Vaani ka kitabi cabins pe she has made a video where she has reviewed pencils. You guys should definitely go and check it out. We guys are making a lot of reels. All four of us are like heavily like focusing on making a lot of reels. So that is there. Hindol, when he came here last time, he made a lot of videos. Wo bhi abhi like you'll see them in multiple forms, and they are also going to come. बाकी मार्च में like अभी होने देते हैं, फिर बात करते हैं. So big things lined up for Big, March. big, big things. और जब भी मैं ऐसी कोई लाइन बोलने लग जाता हूँ ना, वानी ऐसे जाते वानी gives me a look, but yeah, No, like but ऐसे jinx नहीं करना, but like नहीं जिंक्स तो touch ठीक wood है कि there भाई, are so जिंक्स. many big things happening कि you could be referring to any big thing and Yeah, it would I still could be be true. I could be referring to any big thing. And yeah, someone wrote VM calling VM. Yeah, भाई VM calling VM के भी episodes देखो जाके. हाँ. If you guys might get more episodes of that. के मैंने इनको बुलाओ. Yes, कोशिश जारी है या जारी है जारी, क्या? जारी. Also, जारी. guys, एक मतलब लास्ट असाइनमेंट है आप लोगों के लिए. अगर आप कोई गेस्ट चाहते हैं जो कि आप चाहते हैं कि चैनल पे आए और हमसे बात करें, प्लीज उनको जाके डीएम कीजिए, उनको स्पैम कीजिए Yes. कि ये हैं 4 लोग अच्छी अच्छी बातें Yeah. करते हैं, इनसे जाके बात कीजिए प्लीज. या दिस विल हेल्प अस अ लॉट. इनफैक्ट लाइक जब मेरे को कोई बोलता है ना इसको अलावा, तो मैं गेस्ट को टैग कर देता हूँ. किसी ने मेरे को कहा हाँ. जिम साहब को बुलाओ, मैंने जिम साहब को टैग कर दिया. लाइक एंड जिम साहब के साथ मेरी बहुत पहले बात हुई थी, एंड ही लाइक रिप्लाइड टू मी, लाइक ही मैसेज कि yes we'll do it soon now. So like होएगा, like you guys just need to like message them हाँ. also enough. So आप दोनों the sides से like आप लोग like pressure डालिए, and like the episodes will happen. And yes, एक हैशटैग दे देते हैं आपको. लाइक हैशटैग इज सिंपल, लाइक माय फेवरेट सीन. ठीक है, माय फेवरेट सीन यूज करके टेल अस अबाउट योर फेवरेट सीन. एंड दिस वाज एन अमेजिंग. अभी भी 200 लोग देख रहे हैं. वी लाइक रियली अप्रिशिएट दिस गाइस. टाइट 100 मिनट्स होने वाले हैं अब लाइक इसके. सो बट लाइक या this was amazing. Thank you so much. Thanks and all. Thanks Vaani. Thanks Disha. This was a lot of fun. We'll see you guys, and bye. I'll end the stream now. Bye.